नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेल्थ फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स पर। अंग्रेजी में एक कहावत है, एडवर्सिटी डज नॉट कम अलोन। अभी हम कोविड-19 से पूरी तरह निपट ही नहीं पाए थे कि मंकी पॉक्स नामक बीमारी ने दस्तक दे दी है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर यह बता दिया है कि इसे हल्के में ना लें। क्या है मंकी पॉक्स? ये कैसे फैलता है? इससे बचाव और इसका उपचार क्या है? क्या इसके लक्षण हैं? क्या ये जानलेवा है? ऐसे कई सवाल हम सबके मन में उठते रहते हैं। डेटा की कमी की वजह से मंकी पॉक्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। तरह तरह के अफवाह उड़ रहे हैं। झाड़ फूक वाले बाबा सक्रिय हो गए हैं, जिन्होंने आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपनी दुकानें सजा ली है। ऐसे में हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपको इस बीमारी के बारे में इतना कुछ बता दें कि कोई आपको गुमराह न कर सके। इसी को ध्यान में रखकर हील फाउंडेशन ने देश के बड़े बड़े डॉक्टरों को आज के शो में आमंत्रित किया है, जो मंकी पॉक्स के हर पहलू के बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले हम प्राणायाम पर भी बात करेंगे विशेषज्ञ के साथ। हमारा ये कार्यक्रम अगले 3 घंटे तक यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव रहेगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं ये राउंड अप वीडियो। नमस्कार। एंटी कोविड वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। सरकारी क्षेत्र में इसे एक बड़ी उपलब्धि मानकर इसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का एक ऐसा वर्ग भी है जो इसे उपलब्धि न मानकर आंकड़ा मात्र मान रहे हैं। उनका कहना है कि मास वैक्सीनेशन की जगह फोकस्ड वैक्सीनेशन हो तो बेहतर परिणाम निकल सकते हैं। We kickstart this episode of yoga on sound healing. So, sound healing, like Sir has said, of course, we have ragas in the Indian classical music like that. We have ragas in our body, right? So we have 7 energy centers in our body, and each energy center has a different meaning, has a different vibration, has a different energy. So sometimes what happens, like before this session, we saw the video on sleep. So sometimes what happens, if a energy center is imbalanced, it can cause the imbalance in the entire body. Like our body is our universe. ठीक है, हमारा बॉडी हमारा टेम्पल है, हमारा पूरा यूनिवर्स है। अगर उसमें एक एनर्जी सेंटर, जिस एनर्जी सेंटर को रेफर करके उसका नाम होता है चक्रा, क्योंकि हमारे बॉडी में 7 to 8 चक्रास होते हैं, राइट? तो अगर उसमें से एक चक्रा इम्बैलेंस्ड है या क्लोज्ड है या उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, फिर पूरा जो एनर्जी सेंटर है, पूरा जो बॉडी है वो डिसबैलेंस्ड हो जाती है। So we'll start with the first. I'll just explain you the goals, okay? So
So here I have 7 balls, as I think we can see properly. Okay, so I will start explaining from this. So I have placed the small balls, as you can see, behind, and then I'm coming to the big balls like this. Okay, जैसे हमारे 7 सुर होते हैं, वैसे ही सारे गामा, तो वैसे ही ये 7 balls. Everything 7, right? 7 energy centers, 7 chakra, 7 raga, 7 sur. Okay, so now you have your belly. This is, and this bowl, this small bowl right here, this is the crown chakra. So crown chakra मतलब जो हमारे हेड के ऊपर वाला halo chakra होता है. This is the energy center, and this stands for your bliss, joy and ecstasy. जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, everybody let's imagine कि हम सबसे आपका जिंदगी का अभी तक बेस्ट मोमेंट, ठीक है, तो हम आइज क्लोज करके इमेजिन करेंगे कि हमारा सबसे लाइफ का बेस्ट मोमेंट, जिसमें हमें कुछ ग्रीड नहीं, कुछ लेन देन नहीं, बस हम डीपली हैप्पी, ठीक है. So you can visualize that moment when you are very deeply blissed, joy, just deeply happy, okay. So yes, so that this is the activation for that, and then you have your other one, that is your A, and this is for your third eye between your eyebrows, and this is your Agna chakra, right? And for this you have your intellect, wisdom and everything. तो इस बोल से हम अपने, तो ये बोल हमारा ब्लिस और जॉय और अपना हेलो चक्रा एक्टिवेट करता है. फिर हमारा ये वाला थर्ड आई जो कि है आपका विजडम, इंटेलेक्ट, ठीक है, वो एक्टिवेट करता है. दिस इज when you're doing your meditation, sometimes you get visions of wisdom and all of that, so you activate like this, ठीक है. Then you have your G, that is your throat, that is very important. Your throat chakra, that is for your throat, your communication, your emotions, okay, expressions. So this is very important because आजकल लोगों का जो इमोशनल चक्रा है वो काफी डिसबैलेंस्ड हो रहा है. क्यों डिसबैलेंस्ड हो रहा है? डिफरेंट रीजंस के जो मैंने पहले स्टेट करा, ठीक है. किसी और का मूड खराब है तो हमारा इमोशन खराब हो जाए, किसी ने आपसे बुरी बात करी तो हमारा इमोशन खराब हो जाए. This is actually one of the very important goals, okay, because this will तो इसकी आप वाइब्रेशन अगर सुनो तो आपको फील होगा कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, ठीक है. इंस्टेंटली इट विल रीच अ सेंस ऑफ कामनेस बिकॉज इट्स डायरेक्टली वर्किंग ऑन योर इमोशंस, ठीक है. On July 17th, India achieved a landmark of having 200 crore vaccination done against COVID. Now, to discuss this topic on 200 crore vaccine mark, what next? You had a very interesting graph to show, and that after one line of vaccination, and you showed that after a period of time you had increased number of cases and increased number of deaths, almost similar. But can you give us details about what is the age population, what is the accessibility? This seemed to be very universal. Now, what was the size? What are the people who developed infection and those who died? Well, were they aged people? What is the population scenario? Actually, this is the limitation. This is the ecological data, population-based data. So we have to go at a granular level, but that is also available over the 2 years. We know adequate about the virus, that the probability of an elderly dying above 70 years is 1,000 more than a person below 18 years dying. So we could have used this from the very beginning when we had rolled out the vaccine. And then also we know, like Dr. Sanjay Rai said, 2 child in 1 million die with infection, and those 2 child are comorbid child. So we could have identified these vulnerable groups, elderly above 70 and people with comorbidities,
perhaps children with comorbidities, and left the rest of the population to go on their natural duties. And this vaccine we could have then kept on doing pan-corona or different strains, because now you cannot keep on changing the strain for the whole world population. That would be very costly affair, and by the time you change it, there is a new variant. And once we get a natural infection, I don't think we should be afraid of reinfection, because reinfection is going to be milder after mutation, because as per the Darwin's law, the mutations become milder, and that acts as a natural booster. I mean, that person has a natural infection and he or she gets a reinfection. Firstly, we have done our own studies, we have published it, we have followed up more than 1,000 people after the first wave. In the second wave, only 13 got the reinfection and all got very mild. So it was about 1.3 reinfection. And this we should not be afraid of mutations. And I think this should be, we can't run after, because now we may get now people are saying you get influenza virus. Because firstly, this vaccines do not, respiratory vaccines for respiratory viruses cannot prevent transmission, because you see the entry of the virus is through the respiratory. Antibodies are in the blood. It is like that you have a gun in your bedroom and the gangster comes to the drawing room. By the time you take up the gangster has already entered and you are looking for the gun in the bedroom. So the antibodies are in the blood and the respiratory route is the first way. डेनमार्क ने कहा है, एक्सेप्ट किया, रादर कन्फेस किया है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना एक गलती थी उनकी। भारत के संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा देखते हैं कि रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एक इंडिविजुअल पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, ओवरऑल रिस्क किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी इंटरवेंशन का रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं। जब हम रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस एडल्ट में कर रहे थे, उस समय जब ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, तो बेनिफिट जो है उसके फेवर में था वैक्सीनेशन के, क्योंकि जो भी लिटरेचर अवेलेबल था 80 to 90% रिड्यूस कर रहा था इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। द प्रॉब्लम इज हम ससेप्टेबल पॉपुलेशन को भूल जाते हैं, हम 80 to 90% करेंगे। बिगिनिंग में जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते, मैं सारे क्लिनिकल ट्रायल में कर रहा था, एडल्ट में किया, बूस्टर भी मैंने किया है, क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में भी मैंने किया है। तो उस समय जो है ससेप्टेबल पॉपुलेशन में था, रिडक्शन हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहा था, डेथ भी कम हो रहा था, वह था। तो एडल्ट में अगर 80 to 90% मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, और कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, सीवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कई होती हैं। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को देखिए तो कार्डियोमायोपैथी करता है, पेरिकार्डाइटिस करता है, कोई ब्लड क्लॉटिंग कुछ वैक्सीन करते हैं, थर्मोसाइटोपिनिया करता है, जीबी सिंड्रोम करते हैं, तो कई, बट ये सब रेयर होते हैं वैक्सीन से। तो अगर सीरियस एडवर्स इवेंट को हम उसमें काउंट भी करते थे एडल्ट पॉपुलेशन में, तो चूंकि 1.5% के आसपास केस फेटलिटी रेट था, इन्फेक्शन फेटलिटी रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केस फेटलिटी रेट था उस समय, उसमें अगर रिडक्शन हो रहा था तो काफी ज्यादा बेनिफिट था जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल खत्म हो गया तो वह भी बेनिफिट खत्म हो गया वैक्सीनेशन का। चिल्ड्रन के केस में यह ऐसा नहीं था जो डेनमार्क ने कहा, किसी कंट्री ने, आप देख लीजिए जिस दिन लॉन्च हुआ था, मैंने कहा था कि दिस विल इंक्रीज द डेथ्स अमंग चिल्ड्रन। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1.5% नहीं मर रहे हैं, मतलब हर 10 लाख में करीब 15,000 लोग नहीं मर रहे हैं एडल्ट जैसे। 18 साल से कम में जो है या 2 पर मिलियन है, मतलब हर 10 लाख में 2 बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पे अगर रिस्क बेनिफिट आप करते हैं, इवन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, वो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे किसी भी बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ। In your practice, do you think the cases of COVID is being hyped up when you have many other problems like tuberculosis, malnutrition, deaths due to various other things, also children dying? So do you think that we are over-focusing on COVID and defocusing in many other areas where India really needs attention? Yes, absolutely right. I totally agree with your question also, that since we all are aware that when the COVID started, so it was so deadly that everyone, each and every individual, the focus was only on the COVID. Even with any kind of symptoms,
the assumption was initially before testing or anything that it was presumed that it is COVID, and the panic was created. In my practical experience, I have seen practically patients in both first, second, third waves. I have been in COVID ward and seen the patients. But yes, there were many patients who were having other problems also, like you quoted tuberculosis. So there were many patients with active tuberculosis, and because it was a protocol when a patient with COVID presented with respiratory symptoms, a CT scan of the chest was also done. So at times, there were a number of times when the evidence of tuberculosis was seen in the lungs, but there was no evidence of any COVID pneumonia or viral pneumonia was seen. Similarly, the patient presented in OPD with the complaints of, I'm talking about the time when the COVID was at peak. The patient presented with complaint of fever and some sore throat and all. It was by default assumed that the patient must be having COVID. So, and even the patients coming there were also whether we go for testing or not, you just start with the treatment for COVID if whatever is comfortable for me or I can be cured. But on evaluation and further investigations which were done, the number of diseases were there which were detected, which patients were not aware, or before, if patient was evaluated somewhere else, those particular type of diseases were not ruled out. So because of this pandemic, COVID, and right now also at present scenario also, this is something that basic diseases or the basic illnesses which are there or which can be cured if treated on time. There were patients who were coming with chest pain and all and coming out to be myocardial infarction. It was patients of MI, heart attack. But chest pain, but fever, cold cough, the first thing was COVID. So the treatment started on line of COVID. The investigation evaluation was done on the basis of COVID. But true, with all these, this was basically a panic which was created because of that. All these illnesses which could have been taken care of before or we should have been ruled out, those were missed somewhere. Dr. Rai, one thing is there, you said that this spike protein mutates very fast. So is it possible in future to have a pan-coronavirus vaccine rather? No, I don't think so. It's very difficult to predict about the mutations, right? More than thousands of mutations have already occurred. Although the variant of concerns are only 5, but more than, even in this country, we have documented more than thousands of the mutations. So what's the solution? Have a vaccine every year? Now we have evidence that those who recovered from the COVID, they are better protected, right? Better protected from severity and death. Reinfection may occur or breakthrough infection may occur, right? Both are providing protection, but your vaccines are not providing protection from the infection. They are providing protection from the severity and death in susceptible population. Whereas natural infections is providing protection from the reinfection also. The rate of reinfection is much lower those who recovered from the COVID. If you compare with the vaccinated group, if you compare breakthrough infection versus reinfection, the reinfection rate are still, even during Omicron, there are a lot of publications. As I mentioned earlier, daily we are producing almost 100 publications. So overall, in due course of time, entire world, we will lose this susceptible population, and whatever knowledge we have, we can say those who recovered from COVID, they are the best protected person on this earth as of now. So I don't think that this is going to create a problem. In those countries, this will create problem who never had COVID wave, like your Singapore, or now they have. So they had COVID a few months ago. Now I can say even these countries are also protected. Welcome back. I am Shankar Raj, President of Health Foundation and the host of the 43rd episode of Health for All, along with my co-host Kishore
malware. This episode is live on Facebook and YouTube. We kickstart this session with yoga, an episode of yoga on different forms of pranayama. To explain and demonstrate different forms of pranayama, we have with us Dr. Pooja Pandey, a certified yoga teacher, an expert in aerobics and Zumba, and runs Ayurveda Physiotherapy, combining all these techniques for better living. She's also the creative spirit behind her successful YouTube channel called Ayurveda Physio Tips. Welcome, Dr. Pooja Pandey. How are the rains in Bangalore? Oh, it's raining cats and dogs here. Yes, here also in Kerala we have a lot of rain and plus very cold. It must be cold in Bangalore too. Yes, it's cold in Bangalore. Yes. Yeah. So you have time till 8:55, and then this time I'm going to give the entire platform to Kishore so that you can get a few questions answered by his. He can question in his inimitable Hindi, Shuddh Hindi style. So you can answer those questions. You're very fond of hearing his Hindi, so I'll leave the platform to you. I'm fond of you also, Shankar. I am fond of you also. No. It is very rare to hear Shuddh Hindi in at least this Health4All platform. Yes. Okay, over to you. Namaskar. So today we are going to talk about a very important topic, and that is pranayama. हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करने वाले हैं और वो है प्राणायामा. प्राणायामा एक बहुत ही एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस है. It's not that it has just come now and it's the happening thing. No, nothing like that. It is basically from the time maybe India civilization had come, and from that time onwards, actually, pranayama has come. What do we mean by pranayama? Prana, what does prana mean? Prana means life. Yama, that means controlling it or keeping it in our control. Okay, that is yama. So pranayama is basically keeping your life force in your own control. Like, people say that, गुस्सा आ जाता है यार, मतलब कंट्रोल में नहीं होता, या फिर नहीं आती है यार नींद, कंट्रोल में नहीं होता, मतलब सोने की कोशिश करते पर कंट्रोल में नहीं होता. It has to do a lot with basically the way you are breathing or how consciously you are breathing. जब मैं बोलती हूँ कि conscious breathing, इसका मतलब कि आप कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है ब्रीदिंग, राइट? आप 1 घंटे पानी नहीं पिएंगे तो आप जिंदा रहेंगे. आप 1 घंटे खाना नहीं खाएंगे, आप जिंदा रहेंगे. आप अगर बाहर घूमने 40 दिन ना भी गए लॉकडाउन में तो भी जिंदा रहे, है ना? पर अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मिनट आप सांस मत लीजिए तो क्या आप जिंदा रहेंगे? नहीं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ की है वो है ब्रीदिंग, द वे वी ब्रीथ. ओके, ये बात अलग है कि हम में से बहुत कम लोग उस चीज पे अटेंशन देते हैं. ओके, पर उस चीज पे अटेंशन देने को प्राणायामा बोलते हैं, है ना? जब हम अपने ब्रीदिंग में अटेंशन दे, that's basically pranayama or yogic breathing as well. Okay. Now, pranayama we basically divide into 3 parts. Okay, that is inhalation, exhalation and retention. Inhalation मतलब सांस को अंदर लेना, exhalation मतलब सांस को बाहर छोड़ना, और retention मतलब ब्रेथ को होल्ड करके रखना. इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, तीनों प्रोसेस का. किसी प्राणायामा में हमें रिटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्राणायामा में हमें इनहेलेशन नॉर्मल करना है पर फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है. तो इसीलिए हर एक प्राणायामा में इन तीनों चीजों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है. नाउ इससे होता क्या है? व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, व्हाट डज हैपन? The diaphragm, which is basically a curvature. Can you see our diaphragm is basically a curvature. ऐसे convex shaped में होता है. जब हम inhale करते हैं, now let me inhale.
अभी क्या है, ये फ्लैट हो जाता है, हमारा thoracic cavity expand हो जाता है, right? We inhale, the diaphragm becomes, thoracic cavity becomes more, lot of air inside our body. Now, when we exhale, what happens? The carbon dioxide goes out. That means lot of toxins get released by pranayama. We always talk about toxins getting released from our body, doing things, practices for toxin getting released from our body. But you need to know that your toxins from your body, 60% of the toxins from your body can be actually released through your breath. And that can be done by a conscious breathing or pranayama. तो प्राणायामा हर किसी एज में और हर किसी लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो यंग हो. ओके, नाउ सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज प्राणायामा. ओके, नाउ हाउ टू डू प्राणायामा. 7 चीजें, 7 things which you should remember. 1, when you are doing pranayama, your room has to be ventilated. When I say ventilated, there has to be windows and doors from which air can be exchanged, because you can't do it in a closed room. Okay. Second, very important is it has to be distraction free. Somebody is dancing here, somebody is watching the news. You can't sit there and do the pranayama. So it has to be slightly silent place so that you can take your attention from outside to your own breathing. Okay. So it has to be distraction free. Third, you should practice pranayama empty stomach, not after your meal. Okay. So I'm not saying that you have to be absolutely empty stomach in the morning. You can practice pranayama in the morning as well as in the evening, but there has to be minimum 2 to 3 hours of gap in your meal. When you practice pranayama, your stomach should be empty. You should not feel that stomach is full and start practicing pranayama. You cannot do that. Okay. Fourth, very important point is that you should practice at least 15 to 20 minutes of pranayama every single day to start seeing the benefit of it. We will talk about what are the benefits of pranayama. तो 15 मिनट रोज, 15 से 20 मिनट आपको रोज प्राणायामा करना है. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ 1.5 घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 1.25 घंटा करना है. मैं बोल रही हूँ 15 से 20 मिनट खाली पेट आपको प्राणायामा करना है. नेक्स्ट इज बेसिकली जब आप प्राणायामा कर रहे हैं तो आपको अगर स्पेशली आपको कोल्ड है, कफ है या आपको फीवर है एंड आप थोड़ा सा प्राणायाम करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट none of the other people are there, because there's a lot of toxins which you will release, which other people can inhale and they can get into infection. Okay. So make sure that if you have slight any viral or bacterial problem going on, don't do it with other people in the same room. Okay. Like I used to tell a lot of COVID patients to do a lot of pranayama and it really helped them. पर मैं उनको बोलती थी कि जब भी आप प्राणायाम करें तो मेक श्योर, एनीवेज कोविड पेशेंट्स के पास ज्यादा लोग कोई जाते नहीं है, पर आई यूज्ड टू स्ट्रिक्टली टेल देम दैट व्हेन यू आर डूइंग प्राणायामा, नोबडी शुड इवन एंटर विद द मास्क. ओके, डोंट अलाउ एनीबडी. सो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है तो प्राणायामा हैज टू बी डन अलोन, नॉट विद अदर पीपल टुगेदर. ओके. एंड नेक्स्ट है कि प्राणायामा सुबह या शाम दोनों को प्रैक्टिस हो सकता है. ऐसा कोई टाइम नहीं है प्राणायामा का. ऑफ कोर्स अगर आप मॉर्निंग उठने के बाद प्राणायामा करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है. पर अगर आप कोई चीज करते हैं, मान लीजिए आप जिम जाते हैं, मान लीजिए आपकी कुछ क्लासेस हैं या आपको ऑफिस जल्दी जाना है, तो ऐसा नहीं है कि प्राणायामा किसी और टाइम पे नहीं हो सकता. आप शाम को भी कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं. बस ये याद रखें कि आपका पेट खाली होना चाहिए. So this is about how to do pranayama. You know what all things should be there when you are doing pranayama. Okay, you should be also
pain-free. Lot of pain is there. You will be not able to concentrate on your breath. Your whole attention will go towards your pain. Okay. So these are the things which you should consider when you are doing pranayama. तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अच्छा आप पूजा मैडम बोल तो रही हैं प्राणायाम करने को, पर करना क्यों है? यू नो, कितना पूरे दिन तो सांस लेते रहते हैं, क्यों कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है ना? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब ये हमें बहुत तरीकों से लाभदायक होता है. पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज basically in today's health, pranayama plays a very, very, very important role in mental health. When I say pranayama, you know, controlling your breath or it also, when you know the art of basically breathing deep and not shallow breathing, and you know that okay, you are not feeling okay and you're feeling angry and the breath is changing, and you can actually control the breath, which automatically changes the emotions you are in. Okay. So it is very important in today's world to practice pranayama for your mental health as well. It helps you in sleeping. Many people who are suffering from apnea, sleep apnea, they don't get sleep in the night. And not a continuous sleep, pranayama makes a lot of difference. So you can actually do pranayama followed by another 20 minutes of meditation. And when you follow it every single day, that makes a lot of difference in your sleep as well. Third very important point is we have 3 lobes in the lung, right? Upper lobe, middle lobe, and lower lobe. Of course, left side, one lobe is missing because of the heart. But generally it is upper lobe, middle lobe, and lower lobe. So when we do breathing, we generally keep it to the upper lobe. So we do, for me, it is deeper because I have been practicing. So generally we keep it here, okay, and it doesn't go. So when I breathe, my chest does not expand so much. But when you start doing pranayama, all the 3 lobes start actually activating. Okay. And that was the reason that even during COVID, many of the people who have been practicing with pranayama forever in their life, they could recover well during COVID because their lungs were much better than the people who never practiced pranayama. Okay. So your lung capacity improves. Okay, when you actually do pranayama, your lung capacity improves. Your blood pressure, if you have a high blood pressure, there are a lot of pranayama which can actually reduce your blood pressure, okay, or help you treat with lifestyle disorder like PCOS, diabetes, blood pressure, thyroid, hypothyroidism especially. So all the lifestyle oriented disorder, it helps you making it better by just a conscious breathing or by doing pranayama. It also helps in balancing your emotions. As I said, it helps you in mental health. So it also helps you, especially Nadi Shodhan pranayama, really help you in basically balancing your emotion. It also opens up your both nasal pathway. Okay. So helps in opening up your nasal pathway, breathing better. And it also helps you lowering your heart rate. Okay. So generally heart rate is around 70. For all the people, it is around anywhere between say 68 to 75, 78, something like that. But people who run or people who do a lot of activities, cardio activities, their heart rate becomes lower down, which is very good because you can actually exercise more. And that happens just by your conscious breathing as well. Okay, so by doing pranayama, you will actually help yourself in breathing better and bringing your heart rate down, and you can actually exercise more by just doing a conscious breathing. Okay. Now we will discuss different types of pranayama. So this was basically what is pranayama, how to do pranayama, what are the benefits of pranayama,
And now we will do about some common pranayama. I've demonstrated most of them, but because today there is a class of pranayama, I would like to demonstrate. Now I want Shankar and Kishore, both of them, to do pranayama along with me. Doesn't matter whether the so let's do pranayama. So let's sit comfortably and easily. बहुत जरूरी है कि आप कंफर्टेबली बैठें. अगर आपको नीचे बैठना नहीं है तो आप बेड पे बैठ के ये प्राणायाम कर सकते हैं, और जिस तरीके से बैठना चाहे उस तरीके से बैठ सकते हैं. तो अभी मैं सुखासन में बैठी हूँ, मेरे को नीचे बैठने में कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं नीचे बैठी हूँ. पर आपको अगर चेयर पे बैठना है या आपको बेड पे बैठना है, आप कहीं पे भी बैठ सकती हैं. मेक श्योर आप अगर कोई लेदर की बेल्ट पहन रहे हैं या लेदर का वॉलेट रखे हैं तो वो दूर रख दीजिए, बिकॉज लेदर एब्जॉर्ब्स लॉट ऑफ एनर्जी. सो आई डोंट वांट एनी लेदर स्टफ व्हेन यू आर डूइंग प्राणायामा. ओके, योर क्लोथिंग हैज टू बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल. आपके क्लोथिंग शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट योर lungs, your it should not be tight. It should be as comfortable as possible. We'll start with alternate nasal breathing. Your one finger, which is basically the left hand, is in chin mudra. And when I say chin mudra, it is just touching each other. Okay, it is not like you are holding it like this. एकदम मतलब हल्के से स्पर्श करना है ना, हल्के से, एकदम ऐसे नहीं करना है, हल्के से. आपका लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा में है, आपका राइट हैंड में 2 fingers इन बिटवीन द. अच्छा, एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो नेजल ब्रीदिंग ऐसे भी करते हैं, मतलब ये दूसरे तरीके से ऐसे नेजल ब्रीदिंग करते हैं, बट मुझे ये वाला पसंद है क्योंकि इसमें आई फील इट इज मोर मेडिटेटिव, बिकॉज योर 2 fingers are in between the eyebrows. So I take my attention to in between the eyebrows and my thumb closing my right nostril and my another 2 fingers closing my left nostril. So I check which is my active nostril. Right now my right nostril is the active nostril. Okay, तो हम क्या करेंगे, आंखों को बंद करेंगे. Breathe in from the right nostril. Breathe out from the other. Breathe in from same. Breathe out from other. Continue. Now, how do we inspire and expire? So, breathe in 2, 3, 4, hold 1, 2, out 5, 6, hold 1, 2. So what you have to do is, आपको सांस 4 बार अंदर लेना है, फिर होल्ड करना है और इससे छोड़ना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 6 बार. ओके, फिर उसके बाद होल्ड करना है 2 ब्रेथ, बस 2 ब्रेथ, और उसके बाद इससे वापस सांस अंदर लेके 4 बार, होल्ड 2 बार, 6 बार यहां से बाहर निकालना. तो जब भी आप इंस्पायर करेंगे, मतलब जब आप सांस अंदर लेंगे 4 बार लेंगे, जब आप एक्सपायर करेंगे तो आप ट्राई करेंगे कि 6 काउंट तक आप एक्सपायर करें. जब आप होल्ड करेंगे या रिटेन करेंगे, आप 2 काउंट को रिटेन कर सकते हैं.
अगर आप ऑलरेडी प्राणायाम प्रैक्टिशनर है और आपको कोई डिजीज नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, आप रिटेन 4 ब्रेथ के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब किशोर जी हम ऐसा करेंगे कि 10 साइकिल्स ऑफ ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या आलोम विलोम प्राणायाम का 10 बार आप करके देखिए। ठीक है, हम दोनों साथ में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लोज योर आईज। Let's breathe in from the right nostril. Hold. Breathe out. Hold. Breathe in. Hold. Breathe out. Hold. Breathe in. Hold, breathe out. Hold, breathe in. Hold, breathe out. Hold, breathe in. Hold, breathe out. Hold, breathe in. Hold, breathe out. And relax. Relax completely. Don't open your eyes. Gentle smile on your face. मुस्कान बनाए रखिए. And slowly you may open your eyes. So किशोर जी, अभी हमने 10 ब्रेथ नहीं, एक्चुअली 3 साइकिल ऑफ ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग की, बस 3 साइकिल. ओके, आपको 3 साइकिल ऑफ अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग में जब आपने शुरू किया और अभी आपने जब खत्म किया तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आया? यहाँ पे थोड़ा हल्कापन महसूस हुआ। हल्कापन महसूस होता है ना? तो मान लीजिए इस 3 ब्रेथ को अगर हम 10 ब्रेथ कर देंगे या फिर उसको 5 मिनट कर देंगे तो क्या होगा कि हमको जो भी दिमाग में उल्टा पुल्टा चल रहा है वो सब चला जाएगा। दूसरा, हमको नींद बेहतर आएगी। अगर हम इसको करके सोएंगे तो हमें नींद बेहतर आएगी क्योंकि यहाँ पे कुछ होगा नहीं। अभी आप सोचना भी चाहें तो आपको 1 मिनट लगेगा कि मैं सोच क्या रहा था। ब्लैंकनेस आता है जो जनरली बहुत डिफिकल्ट होता है आज के जीवन में, वो ब्लैंकनेस आना, वरना 10 चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो इसीलिए ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग हर किसी को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आपको हार्ट डिजीज है या आप प्रेग्नेंट है या आप you have COPD, that means basically any of the lung disorder, जिसमें आपको एक पॉइंट के बाद सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, तो आप ये जो मैं बोल रही हूँ 2 सेकेंड होल्ड करिए, तो वो होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है और उतने ही काउंट्स करना है जितना आप कंफर्टेबल हैं। एक नॉर्मल इंसान इसको आराम से 5 से 10 मिनट तक कर सकता है। ओके, दे कैन जस्ट होल्ड दिस ऑल्टरनेट नेजल। मेरे को और कोई प्राणायाम अभी नहीं करना, बस ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करना है, तो 10 मिनट तक आप सिर्फ यही कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है और मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, स्लीप के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड अगेन ओपनिंग अप योर नेजल पाथवे। कभी आपकी नाक बंद हो जाती है ना, तो इसको जरूर करके देखिए, तो नाक खुल जाएगी। ठीक है। दूसरा, अभी है ना मेरे पास टाइम? हाँ, 10 यस। दूसरा प्राणायाम मेरे को बहुत पसंद है, भस्त्रिका प्राणायाम, विच इज बेसिकली टू रिमूव टॉक्सिन्स। जैसे मैं बोल रही थी कि आपका 60 से 70% ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी यू कैन एक्चुअली रिलीज थ्रू योर ब्रेथ।
सो इसको आपको बेसिकली 3 साइकिल करना है और 20 बार 20 बार 20 बार करना है। 3 साइकिल 20 बार 20 बार 20 बार। भस्त्रिका प्राणायामा करने के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन कैसे होता है? आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और आराम से उसके ऊपर बैठ जाइए। तो ये वज्रासन इज अ बेटर पोज फॉर भस्त्रिका प्राणायामा। भस्त्रिका प्राणायामा में आप क्या करेंगे? लूजन अप योर शोल्डर, लूजन अप, ओके, फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल बहुत जरूरी। जब आप योगा कर रहे हैं ना और मुस्कान नहीं हो तो योगा अधूरा हो जाता है, इसलिए मुस्कान बहुत जरूरी होती है। स्माइल ऑन योर फेस, टेक 2 लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, 2 लॉन्ग डीप ब्रेथ ले, breathe in, breathe out, 1 more breath in and breathe out. In Bhastrika, breathe in. While going out, you expire very slowly. So inspire normal, expire forcefully. And relax. Now, very important point in Bhastrika प्राणायाम, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, आपका फिस्ट मतलब कि आपका रिस्ट और आपका शोल्डर एकदम लूज होना चाहिए। इसको टाइटली ना मार रखे, ऐसे नहीं रखना, एकदम लूज, जितना लूज हो सके उतना लूज। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप एकदम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आपका सिर्फ और सिर्फ आवाज जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तब आएगा। आप ये गलत है, नहीं, ये नहीं करना है। नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, और इसको 20 काउंट से ज्यादा नहीं करना है। अगर आप मेंस्ट्रुएशन में हैं या प्रेगनेंसी है या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। या अगर निमोनिया या लंग डिसऑर्डर से परेशान है तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम 3 साइकिल के बदले 1 साइकिल कर सकते हैं। दैट मीन्स जस्ट 20 ब्रेथ्स। ओके, हाँ, तो ये और पीसीओएस के लिए बहुत अच्छा है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, दे शुड डेफिनेटली डू भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, हर एक के लिए लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कितने बार करना है, बहुत जरूरी है। इसमें आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। इसमें 20 ब्रेथ करना है 1 साइकिल, और आप रिपीट कर सकते हैं 2 बार और, तो 3 साइकिल ऑफ 20 ब्रेथ, मतलब 60 ब्रेथ से ज्यादा आपको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना है। शोल्डर और रिस्ट को लूज रखना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे 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 नहीं, आराम से ऊपर ले जाइए, आराम से लाइए, आराम से ले जाइए, जैसे कि ग्रेविटी आपका हाथ पुल कर रहा हो ना, एकदम नेचुरल रिदम में नीचे लाइए, ऊपर ले जाइए, नेचुरल रिदम में नीचे लाइए। इसके बाद अगेन आपकी नाक खुल जाएगी, सब निकल जाएगा, बिकॉज इट एक्चुअली रिलीजेस लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। ओके, अगेन you will feel lot of tingling sensation all over your body because it actually regenerates the cell. Okay, so it's very very good. Okay, that is Bhastrika pranayam for you. Another pranayam which is my very very favorite is Brahmari pranayam. Again, Brahmari pranayam कई लोग ऐसे भी करते हैं, पर मुझे स्वर्णमय मुद्रा के साथ पसंद है। तो स्वर्णमय मुद्रा is basically closing your senses so that you can go deeper. ब्राह्मरी प्राणायाम आप 7 से 10 ब्रेथ काफी है, 7 से 10 ब्रेथ, बस 7 बार या 10 बार कर लीजिए, बस, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ किशोर जी और शंकर जी साथ में करेंगे
भ्रामरी प्राणायाम. ओके, भ्रामरी प्राणायाम के लिए 2 फिंगर बेसिकली ऑन द आईज, 1 डाउन द नॉस्ट्रिल, 1 डाउन द लिप्स, हम क्लोजिंग योर ईयरलोब. ओके, हम नॉर्मल सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे. एक बार और अंदर ले और छोड़े. Breathe in for Brahmari Pranayam. While breathing out, we will say okay? Continue. And relax. Relax completely. Don't open your eyes. Just observe your breath and mind right now. The smile on your face. And slowly, when you feel comfortable, you can open your eyes. ईश्वर जी, हमने बस 5 ब्रेथ लिया, 5 ब्रेथ. 5 ब्रेथ में कितना मेंटली आपको डिफरेंट फील हो रहा है. आपका चेहरा बदल गया है. You look more relaxed now. This is a very, very good for psychosomatic disorder, for anxiety, for mental health, for pregnancy. During pregnancy, one pranayam which you can completely, because pregnancy में क्या होता है, हार्मोन्स अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. मदर को बहुत एंजाइटी होती है क्योंकि बॉडी इतना चेंजेस हो रहा है. भ्रामरी प्राणायाम इज लाइक, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आपको बस 10 बार सांस अंदर लेनी और बाहर छोड़नी. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो आप 3 से 4 काउंट ले रहे हैं, पर जब आप सांस छोड़ रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट 8 काउंट्स डबल द टाइम कर रहे हैं. ओके, इसमें जब आप कानों में प्रेशर डालते हैं तो आप प्रेशर को रिलीज करके वापस दबा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप कांस्टेंट प्रेशर रख सकते हैं. वो आप पे डिपेंड करता है, वो मुझ पे डिपेंड नहीं करता. किसी को कांस्टेंट प्रेशर रखना अच्छा लगता है, किसी को वो प्रेशर रिलीज करके निकालना अच्छा लगता है. तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप डिसाइड करें कि आपको कैसा कंफर्टेबल है. इसको 7 to 8 ब्रेथ्स करना है. दैट्स इट. 7 to 8 ब्रेथ, मैक्सिमम 10 ब्रेथ्स. दैट्स अबाउट इट. 10 ब्रेथ. उसके बाद आप इतने मेडिटेटिव हो जाओगे कि इसके तुरंत बाद आप मेडिटेशन चालू कर सकते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर. सो ये 8 से 10 बार हाई ब्लड प्रेशर का भी मतलब इंसान कर सकता है. सो यू कैन डू इट विद हाई ब्लड प्रेशर, यू कैन डू इट विद. So this does not generally have any contraindication that this person should not do, because you're actually doing it for 7 to 10 breaths. That's about it. Okay. 4th pranayam, one more pranayam before we end. One more. Okay. 4th pranayam is very, very good for anger. जब भी आपको गुस्सा आए, okay, you should practice this pranayam. Don't say immediately when you have so much anger in your mind. Just practice this for 2 minutes, and then whatever you want to say, you should say. Okay. This is called Sheetali Pranayam, or it will calm you down. Sheetal.
what cools you down, what calm you down. Again, very good for high blood pressure. Again, very good for people who have anger issues. Very good for people who have anxiety. Okay. How many times you should practice? Again, 8 to 10 breaths. That's about it. Okay. You can practice it with the clenched teeth. Clenched teeth. Okay. Teeth clenching each other. So first take normal breath in. One more time. In this pranayama, we breathe in from the mouth. Hold. Breathe out from the nose. Now I will demonstrate it. Breathe in. इसमें आपको सांस जब अंदर लेना है तो 4 काउंट लेना है, रोकना है तो 4 काउंट रोकना है, और छोड़ना है तो 8 काउंट छोड़ना है। इसको भी 8 से 10 बार कर सकते हैं, या तो आप क्लेंच टीथ से कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट लिप करके, लिप्स को रोल करके, जैसे कि आप विसिल कर रहे हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप टंग को रोल कर सकते हैं। तीनों शीतली प्राणायाम है। मुझे क्लेंच टीथ ज्यादा पसंद है, मेरे को क्लेंच टीथ ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं क्लेंच टीथ से करती हूँ, पर आप तीनों तरीके से कर सकते हैं। Again, you will just do it for 8 to 10 breaths and that would be done. Now, there are many other pranayamas and many other yogic breathing which you can practice, but this is like way to go. Ujjayi breathing for thyroid, it is very good. That's why I am telling you that Ujjayi breathing is from actually your throat. You actually breathe in from the throat, breathe out from the throat. This is very good for thyroid patients, so you should practice it. Okay, Ujjayi breath. How many times Ujjayi breath? Ujjayi breath you can practice. Actually, if you are doing for the lower lobe, then basically 10 to 12 breaths. Middle lobe 10 to 12 breaths. 8 breaths. If you are doing hair 8, then 6 hair. So because your upper lobe is already working a lot. It is basically the middle and the lower lobe which you need to stimulate more. Okay. So Ujjayi breath is that for you. So there are many other breaths, but abhi time khatam ho gaya hai aur Kishore ji ke prashn aane wale hain. So aaj ke liye itna samapt karte hain. Before Kishore asks question, I just have one small doubt. You said that when you do pranayams, you should be as far as possible alone in the room. But can this normal pranayama, the Bhastrika and Brahmari and Shitali, can it be done even when you have some spare time? For example, at about 10 o'clock or 11 o'clock when you have some spare time, can it be done that way? I did not get you, Shankar. You said that ideally you should do this pranayama in a closed room with no disturbance, and but apart from that, can it be done when you have free time? That is when you're walking. Many of these things can be done even when you're walking. So can it be done at that time? I would not prefer it with walking. Yes, while walking, if you have a bench where you can sit and you can do it, then I would prefer that. Because as simple as pranayama is basically connecting with your breath, right? When you're walking, you have to take care of the steps. You have to take care of who is coming forward, who is going back. There'll be a lot of places your attention will go through. And there'll be little attention to your breath, right? When you're running, how much you can pay attention to your breath, okay? You have to
pay attention to your form of running, who is there forward, is there vehicle coming or something like that. So no, if somebody is sitting in the office, for example, and has a spare time. Yes, they can do it. But the office room should not be completely AC, right? Yes. Because I want ventilation. I want ventilation for prana. What you actually will throw out with your expiration, the toxins, they will be circulating in that room itself, right? So it has to go out. That's all. Yeah, Kishore, you can continue now. थैंक यू सर. पूजा जी, हमारे पास सवाल तो आज बहुत हैं, लेकिन 9 बज गए, समय है नहीं. तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं. आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि लेदर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए प्राणायाम करते समय लेदर बेल्ट वगैरह नहीं लगाना चाहिए. तो ये तो हमारे रूटीन लाइफ में भी लागू होता है कि लेदर हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. नहीं, पर अभी लेदर इतना ज्यादा प्रैक्टिस में है कि मैं कोई होती नहीं हूँ एनजीओ वाली जो लेदर को निकाल दे. मैं पर्सनली तो एक्चुअली लेदर से दूर ही रहती हूँ. मेरे पर्सेस में भी लेदर नहीं होता है. तो मैं पर्सनली बीइंग अ योगिक प्रैक्टिशनर लेदर से दूर रहती हूँ. पर अब आपकी बेल्ट मतलब है नहीं और नीचे खिसक रहा है पैंट, तो आप अगर लेदर की बेल्ट पहनते हैं तो एटलीस्ट प्राणायाम के साइन पे उसको निकाल दीजिए. बिकॉज आप जब एक्चुअली बहुत योगा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो यू विल एक्चुअली गेस लॉट ऑफ एनर्जीज. अगर हम देखा जाए तो शंकर इज अ एनर्जी, पूजा इज अ एनर्जी, किशोर इज एनर्जी. ओके, बिकॉज आप देखिए, अगर जिस दिन हम मरेंगे उस दिन हम सॉलिड फॉर्म से बेसिकली एश में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? विद द एनर्जी विल बी देयर, है ना, our body, that energy I'm talking about. तो अगर आप वो बोलते हैं ना, especially if you read गीता, what you eat you become, ना आप जो खाएंगे वो बन जाएंगे, राइट? अगर आप नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा लेंगे, आप बोलते हैं ये लोगों की संगत ठीक नहीं हो तो आप वहां पे मत बैठिए. क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू एब्जॉर्ब दोज एनर्जीज. ओके, आप भी वैसे. तो इसलिए लेदर, बिकॉज लेदर बनता ही चमड़े का है और चमड़ा एक मरे हुए एनिमल का होता है, तो इट कैन नॉट हैव अ हाई एनर्जी स्टफ. ओके, एनीथिंग विच इज डेड कैन नॉट हैव हाई एनर्जी स्टफ. तो इसीलिए लेदर की बेल्ट को या लेदर के पर्सेस को दूर रखना चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग प्राणायाम. थैंक यू पूजा जी. समय हो गया, वरना सवाल तो बहुत थे आज. बोलिए, मेरे पास समय ही समय है आज. शंकर सर इजाजत नहीं देंगे ना? शंकर सर इजाजत दे दीजिए आज. Yeah, Kishore, you can ask one more question, no problem. I don't want to disappoint both of you on a Sunday. पूजा जी, आपने कहा कि जो प्राणायाम कर रहे हैं अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है अगर कोई आसपास है. आज हमारा प्रोग्राम डॉक्टरों के साथ मंकी पॉक्स पे है. तो क्या प्राणायाम में ऐसी बातें हैं जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके? इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके तो मैं नहीं जानती, पर इन्फेक्शन से जूझने की ज्यादा हिम्मत दिला दे डेफिनेटली है. जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्राणायाम करती हूँ तो मुझे कोविड नहीं हुआ. मुझे कोविड हुआ, पर ऐसा कोविड हुआ कि मैंने लाइव सेशन ड्यूरिंग कोविड किया है फॉर कोविड पेशेंट टू ब्रीथ प्रॉपर्ली. ओके, हाँ. तो ऐसा है कि आप, और मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई 7 दिन, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई और मुझे अच्छे से फीवर भी था, सब कुछ था, बट मेरा इम्यूनिटी बेटर हो गया. तो इम्यूनिटी बेटर हो गया तो आई कैन फाइट विद इट बेटर. ओके, मतलब वैक्सीन की तरह ये इफेक्टिव रहा. हाँ, मतलब ये नहीं है कि आपको होगा, नहीं होगा तो आप बेटर जूझ सकते हैं औरों के अपेक्षा. थैंक यू पूजा जी. शंकर सर. Thank you, Kishore. Just one more. How many pranayams are there? Number. क्या? How many pranayams are there? Shankar, your voice is breaking up. Okay, I'll come nearer. How many
types of pranayama, the number. How many times? No, types. Okay, types. Okay. Shankar, actually, आप देखें, मतलब if we see that there can be, we can actually number the pranayam. But if you ask me that if there are 7 colors, can I make it infinite colors? You can actually make it infinite colors, right? You can mix a lot of the other things and you can make it. Similarly with your breath. If I breathe in for 2 counts and if I retain for 4 counts and if I expire for 5 counts, then it becomes a totally different pranayam. So basically there are 3 things which I said: inhalation, retention, expiration. You can break this with your own stuff. So all of us are actually doing a lot of pranayam throughout the day. It's just that we are not consciously taking attention to it. So pranayam is nothing but consciously you can have your own rhythm. Like I said, okay, if you don't like this, you can do like that. Or if you don't like that, you can do like that. Okay, so yes, there can be numbers which I can speak, but I want it to be infinite, the infinite way of breathing. Thank you very much, Dr. Pooja. I think it was a wonderful session. Thank you very much. Thank you. Thank you. We now move on to episode intro video. Admin, please play that. Welcome back. This show is live on Facebook and YouTube. Yoga plays an integral part in well-being, and Health4All has been promoting yoga, especially for young professionals who are prey to lifestyle disorders. We now showcase the best of yoga and wellness tips from our past episodes over to the best of yoga videos.
today's session, we will be doing yoga along. I'll not be just telling, we will be doing yoga along, how it is so beneficial for your physical health, mental health, your connection. So yoga is nothing but connecting with your breath. That's what sets it apart from the other exercise form, okay? And the connecting with your breath, you have so much control better in your emotions. And when you are emotionally so well, you get physically also so well, because all your diseases are at least 50-60% of them comes from mental health. Okay. So the only thing we both will do right now is chant Om 3 times and 10 long deep breaths. Okay. Let's close our eyes and chant and 10 long breaths. That's all. Okay. Come back to your body, eyes closed. Relax yourself completely. Eye on your face. Let's take a long deep breath in and breathe out. One more breath in and breathe out completely. Let's bring both the palms together right in front of your chest. Take a long deep breath in for Om, and while expiring, we will chant Om. Okay, so inspire. Om. Om. And relax completely. Keep taking long deep breaths in and out. Breathe in and breathe out. As we breathe in, we bring energy into our life. As we breathe out, we relax completely. Your whole attention towards your breath. For 1 minute, stop thinking about what's going to happen, what's not going to happen. Just connect with your breath completely. Don't allow a single breath to get unnoticed. Long deep breath in and out. Very slowly, coming back to your body, breath and surrounding. As you feel comfortable with a smile on your face, let's rub both the palms together and slowly open our eyes. These days, the most common issue that most of us face in this fast-paced life is stress. And as we all know, stress is the root cause for most of the health issues that we all face these days, like diabetes, like hypertension, and many hormonal or lifestyle disorders that we all go through. And I think not just the physical or the physiological issues of stress also affects the mind in different things like depression, anxiety. That stress is the root cause for it. अगर life में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो we all get stressed about it, and if we don't know how to deal with the stress, and if we are stressed for a prolonged period of time, that results in anxiety, depression, and having anxiety and depression for a longer period of time results in many other clinical mental health disorders. So today's practice will be focusing on calming the mind. So we work
first with asanas and pranayama, and if possible, a bit of a short meditation if time permits. So let's look at it that way. The focus of today's practice would be to calm the nervous system, as well as lengthening the breath. Okay, so that helps in reducing the effects of stress. We'll start with a nice restorative posture. Sit either with your knees together or knees apart, right? Whichever feels comfortable for you today. And slowly bend forward, drop your forehead down. Shashankasana or child's pose. You can stay in this posture for about 3 to 5 minutes. This is a wonderful posture to regulate your breath. This is an amazing posture to regulate the nervous system. Remember not to tighten your shoulder here. Keep your shoulders relaxed. And as you exhale, imagine that your body is sinking into the floor. Slowly inhale and come up. Now close your eyes and observe your breath. Doing this posture immediately changes the course of your breath. If you've had a stressful day, a stressful time, the breath becomes very short and shallow, right? And doing a posture like this opens up your breathing channels and pathways and increases the effectiveness of your breath, right? Now, come on all fours. Now, remember your knee is in line with the hip, your hands are in line with your shoulders. Now, inhale, lift hip, chest, and the head up, look up, curling your back. Exhale, round your back and push away from the floor. Inhale, exhale, inhale, exhale. आज का टॉपिक है मेडिटेशन. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि कितने बार हमने कितनी प्रॉब्लम्स के लिए लोगों ने हमें बताया होगा कि आप मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो, बहुत अच्छा लगेगा, सब अच्छा हो जाएगा. इट इज राइट, इट इज नॉट रॉन्ग. हाँ, सही बात है. मेडिटेशन काफी हद तक काफी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, विच इज ट्रू. लेकिन ये भी सच है कि मेडिटेशन करना बहुत डिफिकल्ट है. कितने लोगों ने मेडिटेशन ट्राई करा होगा और मतलब कुछ ही दिनों में, मतलब एक्चुअली डिफिकल्ट से ज्यादा ना काफी बार हमें तो बोरिंग लगता, इतना बोरिंग होता है कि हम करते ही नहीं है, या फिर इतना डिफिकल्ट होता है कि हमने उतना ट्राई नहीं करा. जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स और साइंस की प्रॉब्लम्स होते हैं उसे भी वक्त लगता है कि यू हैव टू गिव इट टाइम. और मेडिटेशन का ये भी है कि आपको कोई मेडिटेशन सिखा नहीं सकता. सो इवन टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी कि कैसे करना है, बिकॉज यू कैन नॉट लर्न मेडिटेशन फ्रॉम समवन एल्स. ओके, जैसे अगर आपको स्विमिंग करना है ना, आपको पानी में कूदना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे. सो मे बी यू हैव लर्न स्विमिंग, कि आपने पढ़ा है स्विमिंग कैसे है करना है, शायद आपके पास ट्रेनर है जो आपको सिखाएगा या सिखाएगी कि स्विमिंग कैसे करनी है, लेकिन सीखना तो आप ही को है, करना तो आप ही को है, राइट? सो मेडिटेशन इज लाइक दैट. यू हैव टू ट्राई. देखिए, पढ़ के देखिए या फिर बिना पढ़ के देखिए. देयर आर मेनी पीपल हु हैव नो क्लू दैट दे आर एक्चुअली मेडिटेटिंग. ओके, काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेडिटेशन करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो जो कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली मेडिटेशन. मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाऊंगी. माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, फोकस्ड मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, मंत्रा, ट्रांसेंडल, प्रोग्रेसिव, लविंग काइंडनेस, विजुअलाइजेशन,
इंटरनेट पे देखो 50 से ज्यादा मेडिटेशन के टाइप्स आपको आराम से पहले सर्च में ही मिल जाएंगे। जैसे अगर आप योगा कर रहे हो हर रोज, व्हाट डू यू डू? योगासना, डेफिनेटली आप आसन करने ही वाले। कि वेरी इंपॉर्टेंट दैट आसना में आप सिर्फ अलाइनमेंट और बॉडी और फ्लेक्सिबिलिटी ही ना करो। नाउ टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, what we're going to do is you already have to be very fit. You need practice. Fit मतलब ये नहीं कि आप perfectly fit. Fit मतलब आपको वो आसना आना चाहिए, आपके लिए वो आसना easy होना चाहिए. Okay, so first you should know the asana. Alignment आपको practice करते रहना है. Okay, so understanding summer is very, very important. Understanding your symptoms is very, very important. When I say yoga for summers, it is basically not for the people who are living in AC. It is for the people who are going in buses, who are going out, who has to face the sun. So all the things which I am saying is not for the people who are all the time in AC. If you are in AC anyways, your temperature is already down. So it doesn't matter if you do any kind of yoga. One very important point in summer is you need to hydrate yourself. I have always emphasized that 70% हमारी शरीर में पानी होता है। तो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और बहुत सारी और सिम्टम्स हो सकते हैं। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पानी पिए। तो पानी रेगुलर बेसिस में पिए। बहुत सारे फ्रूट्स और रॉ फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करें अपने डाइट में, जैसे कि हो गया वाटरमेलन्स। ऑल द मेलन्स आर वेरी वेरी गुड ड्यूरिंग समर। कोकोनट वाटर इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज कोकोनट वाटर में सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, तो सॉल्ट्स होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बॉडी से सॉल्ट लूज करते हैं। नींबू पानी अपने पास हमेशा नींबू पानी रखें, स्पेशली पीपल हु आर ऑफ लो ब्लड प्रेशर, जिनको चक्कर वगैरह ज्यादा आते हैं, वो अपने पास नींबू पानी रखें, जिससे कि कभी भी अगर कहीं भी आपको चक्कर जैसा लगे तो आप नींबू पानी पी सके। Okay, so asanas में what can we do? One thing which we should avoid is complete backward bend. So complete backward bend has to be avoided. More forward bend has to be introduced. More twist has for summer. So all the twisting asana, forward bend asanas are much more preferable than the backward. Then if you are doing say सूर्य नमस्कार, हर कोई सूर्य नमस्कार करता है, बट आप इस टाइम पे चंद्र नमस्कार कर सकते हैं और सन सैल्यूटेशन कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले हम कुछ आसनास करते हैं। तो one of my favorite poses is basically bridge pose, which you can definitely do under summers, and you can even do the supported bridge pose. So you can lie down, both the legs slightly apart, only hip length apart, knee facing upward, not on the sides. Knee is facing upward. Your head is down. You breathe in and bring it slightly up. Breathe out and bring it down. You can hold Setu Bandhasana for some time, okay? You can actually hold it and be like this for 10 seconds, 20 seconds. You can even use a yoga block and be like this for 10 minutes. You know, you want the blood to flow, but you don't want it completely flow that you start feeling dizzy. So this is a very, very good asana. The another thing is basically spine twist, which you can do. So bend your right leg, take it towards the left side and keep looking at your right hand. And keep breathing in and out and come back, and you can do the same thing on the other side. So and relax. Okay, so this is very, very good. Hug. The seated hug is very good. So you can actually just lie down and sit on your tailbone and go slightly back and bring both the legs together and try to hug them and be in this pose for some time. It actually helps you in cooling down. So it
it actually activates the parasympathetic nervous system. So it helps you to cool down. So anytime you're feeling not okay, these are the poses which can help you feel better. Now, first we need to understand that what is adolescent. Okay? क्या होता है जब बच्चे प्यूबर्टी में एंटर करते हैं तो उस स्टेज को हम एडोलेसेंस कहते हैं. You automatically understand looking at the child itself that the child is entering. You need not know the age. You will see the child and you will tell that this is okay, this is a child and this child is adolescent. Okay, you will see the child. Now, what is the difference? Your body start becoming different as you enter adolescence. Okay, children, as the girls, they start developing breast. They start having periods. They start growing taller. Okay, and boys, they also start growing taller. Their voice become little harsh. You will see them turning from cute kids to children with pimples and skin issues all over. So that is what adolescence is. अगर आपके घर में एक एडोलेसेंट बच्चा है तो हमेशा याद रखिए कि वो बंडल ऑफ एनर्जी है. ओके, इतनी एनर्जी है उसके अंदर, प्लस उसका माइंड भी एक्टिवेट हो रहा है हर एक जगह पे. उसको धीरे धीरे कुछ आ गई है. लाइक इफ यू वॉच अ फिल्म विद अ चाइल्ड हु इज लाइक 6 years and even if it is adult film, and the child will not actually get anything out of it. They will not understand anything. But now the same movie, if you sit with a 13-year-old, 14-year-old child, they will absorb every single thing. So first and foremost is you have to channelize that energy. Okay? Because if you don't channelize that energy, the child may get lot of emotional stress, distress, depression, and those issues, childhood issues, which may stay forever. See, if a trauma happens to us when we were small, we can let go very easily. You know, it goes from our mind very easily. But the same trauma, when happens in adolescence, it does not go. It forms the root of our whole life. Okay, so it's very important that the root has to be strong. First, physically, second, mentally, and third, spiritually. Okay, Brahmani Pranayama helps you de-stress yourself in just 7 to 8 breaths. Okay, so it is very important that the child every morning does Brahmani Pranayama, where they put 2 fingers in between the eyes, one down the nostril, one down the lips, thumb closing your earlobe. Take a normal deep breath in and breathe out. Breathe in Brahmari. Just taken 2 breaths and I already feel meditative. So Brahmari is very, because they're bubbling in energy, they are restless. Okay, in that case, this calms them down. This brings peace into them. They snakes them, so they are still energetic but static. They are not doing this. So today we are going to talk about not hyperthyroidism. We are going to talk about hypothyroidism. A lot of difference in hypo and hyper. So what is the difference? First, let us know that everybody talks about I have thyroid. Nobody talks about which kind of thyroid they have. Okay, so one is when your thyroid glands are underactive is when you have hypothyroidism. So you need to activate them. Now in hyperthyroidism you lose weight. In hypothyroidism, you gain weight.
Okay, and that's why it is more important that you exercise or you do yoga or you do pranayama during hypothyroidism. Okay, now apart from strength training, there are certain poses which can help you in yoga to activate your gland. Okay, since the gland is located here in the neck, आपका gland neck के पास होता है, तो आप नेक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, आप ब्रीद इन करिए, पीछे ले जाइए, ब्रीद आउट नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन, ब्रीद इन बैक, ब्रीद आउट, सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़े, अंदर ले, बाहर छोड़े. कितने बार कर सकते हैं? अब नेक एक्सरसाइजेस तो आप दिन में मतलब बहुत बार कर सकते हैं. नेक एक्सरसाइजेस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू मोर टाइम्स. आप टीवी देख रहे हैं, आप नेक एक्सरसाइजेस करिए, सामने आप नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो नेक एक्सरसाइजेस को आप एक्सरसाइज ना समझ के, सो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लुकिंग एट द ऑपोजिट शोल्डर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. We are basically trying to activate all the neck muscles, which thereby can activate your thyroid gland. Okay. Similarly, bending to the side. Breathe in, breathe out, breathe in. आप जब योगा कर रहे हैं तो आपकी सांस से कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी है. तो आप हमेशा याद रखिए कि every exercise or every movement you are doing in yoga, you are connecting with your breath. Very, very important. Okay. The next exercise, which is one of my favorite exercise, that is basically cat and camel. As you see, we actually extend our neck in cat and camel. So come on all the fours. आप crawl position में आ जाएं. याद रखें, जब आप crawl position में आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं crawl position में? आपका elbow आपके नी के पास रखिए और आप सीधे हो जाइए. तो दिस इज योर करेक्ट क्रॉल पोजीशन. योर शोल्डर विल बी राइट डाउन द रिस्ट, सो दे विल बी इन वन स्ट्रेट लाइन. ओके, सो इन दिस पोजीशन यू गो, ब्रीद इन, टेक इट ऑल द वे अप. ओके, गिव ऑल द प्रेशर एट योर बैक. ब्रीद आउट, टेक योर बैक अप, नेक डाउन. ब्रीद इन, टेक इट ऑल द वे अप, ब्रीद आउट. सांस को अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े. सांस को अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े. So this is called cat and camel exercise. Today's topic is mental health in yoga, and absolutely no mental health conversation can get over without the mention of yoga, because just yoga is the absolute answer. Not absolute, I will say. It has to be paired with many other solutions, definitely. But yoga will provide many solutions to you. Normally, when we talk about yoga, we'll say for mental health, do meditation. But meditation is very difficult. It takes years of time and practice to be able to meditate well. So today, we're going to be looking at various solutions and also meditation towards the end. Now, for a basic understanding, in yoga, there are two types of yoga. Okay, there are multiple yoga practices which are around the world, but we're looking at Yin yoga and Gyan yoga. Okay, Yin yoga is when the yoga is calming, it is relaxing. आपको योगा करने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ स्ट्रेच करा, अच्छा लग रहा है. You are refreshed. Second type of yoga is for strength, stability, flexibility. That is Yan yoga. Yoga has three parts: asana, pranayama, meditation. Hip opening asana for the first one. इसका सबसे बेस्ट और आसान सोल्यूशन है वॉकिंग. वॉक के लिए जाइए 10 minutes, 20 minutes, half an hour, however long that you can. It is very good for your health. Second will be in hip opening asana. Let's say you're doing side stretches, or you can be doing lunges. Okay. इसी में आता है अंजनीय आसना. तो आप ये आसना कर सकते हैं जिसमें आपके हिप ओपन हो रहे हैं. काली आसना, if you're sitting down. Yeah, so all of these are going to help you open your hip. And why do we do hip? It's because Mooladhara chakra is one of the chakras. It's the first chakra in your body, which is very important. It is
at the bottom. Okay, when you sit down, it is the lowest position of your body. Okay, मूलाधार चक्र इसलिए होता है कि अगर आपने वो चक्र एक्टिवेट करा, then you're moving towards wanting to do something. आपको ये चाहिए ना कि आपको जिंदगी में चाहिए कि आपको कुछ करना है. Okay, it moves from inertia to mobility. इसलिए अगर आपको मन नहीं कर रहा है काम करने का, you don't know what to do, you are very bored today. Okay, go for a walk. It helps very well. It is because you are activating your Mooladhara chakra when you're walking. Other solutions will be hip opening asanas that I just spoke about. Second set that we're looking at is balancing asanas. कोई भी आसना जिसमें आप बैलेंस कर रहे हैं, जैसे एक पैर पे बैलेंस करो, वृक्षासना, अपने हाथ सामने जोड़ लिए, हाथ ऊपर जोड़ लिए. This is one of the easier balancing asana. अगर आप इतना ऊपर भी नहीं कर पा रहे, you can stand near a wall, take support, जितना पैर ऊपर हो रहा है उतना, then you slowly try to move your hands away, जितना हो रहा है उतना. Moving on to third, we're going to be looking at inversions. Okay, inversion क्या होता है? सर नीचे. Okay, ideally handstand, headstand, but these are very difficult. आपको बहुत दिनों की, महीनों की प्रैक्टिस लगती है इसके लिए. So very simple inversions where blood is flowing to your head will be bend down, touch your feet. Stay for some time. Yeah, otherwise you can spread your legs, bend down. All you have to do is move your head to the ground. So इसमें you can even do mountain pose when you're doing this. Even mountain pose is going to help because blood is flowing to your head. Tuberculosis बहुत सारी जगह होता है, लाइक टीबी मेनिंजाइटिस होता है, ब्रेन का टीबी हो सकता है या लिवर का टीबी हो सकता है. बट योगा का रोल सिर्फ 2 टीबी में आता है और वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें आपका लंग्स इन्वॉल्व होता है. एंड वो भी 2 टाइप का होता है, एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस और लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस. एक्टिव में क्या होता है कि आप अभी भी इन्फेक्शियस है, तो आप कफ करेंगे या स्नीज करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे तो दूसरे को भी फैल सकता है. तो इफ यू आर ए एक्टिव केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देन यू शुड मेक श्योर दैट you are doing any kind of pranayam only in a closed atmosphere and not doing it outside or nearby any person, because you can give tuberculosis. Latent tuberculosis, yes, you can practice these pranayam. The second place where physiotherapy or yoga helps is in spinal TB. Okay, so initially when the spine TB is there, जब आपका एक्टिव है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते apart from bed rest, especially if it comes to any regional lumbar and cervical. तो आपको basically रेस्ट लेना है और तब तक रेस्ट लेना है जब तक TB कम नहीं हो जाता. तो अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है हमें, जिसमें हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कफ हो रहा है, स्पूटम हो रहा है, तो 2-3 चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं. एक, कोई भी प्राणायाम जिसमें फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फॉर ट्यूबरकुलोसिस. ओके, फोर्स्ड एक्सपिरेशन मैं बोलूं तो जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक अगर आप हाथों को यूज करके और एक बिना हाथों को यूज करके. तो अगर आप बिना हाथों को यूज करते हैं तो आप बेसिकली एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और फोर्स्ड एक्सपिरेशन करते हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नेजल कैविटी का यूज कर रही हूँ, मतलब ये रीजन यूज कर रही है, एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व नहीं है. दूसरा प्राणायाम जो आप ट्यूबरकुलोसिस में कर सकते हैं वो है कपालभाति प्राणायाम. कपालभाति प्राणायाम में आप एब्डोमिनल मसल्स यूज करते हैं. एब्डोमिनल मसल्स यूज करने की वजह से आपका एक्सपिरेशन और स्ट्रॉन्ग होता है. तो आप नॉर्मल इंस्पिरेशन लेते हैं और फोर्स्ड एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन, फोर्स्ड एक्सपिरेशन. तो
जब आप इसको एक रेगुलर इंटरवल पे करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। Today I will be combining both yoga and physiotherapy session together. We'll start with the ankle. So ankle pump exercises. It is very, very important to improve the circulation to your whole leg because it's been dangling down throughout. Okay? ये पूरी वक्त नीचे की तरफ रहता है और क्या बोलते हैं, खून जम जाता है बोलते हैं। तो इसीलिए वो सर्कुलेशन बेटर करने के लिए एंकल पंप एक्सरसाइज, एंकल को आगे और पीछे ले, फ्रंट एंड बैक, एंड लेट्स डू सर्कल क्लॉकवाइज एंड सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। ओके, you can do this for 1 or 2 minutes, especially if you are feeling very jammed. Okay, so once you finish ankle, come to the knees, knee to chest. Okay, how much time you should do it? 10 to 20 times. Knee to chest. So breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. आप डायगोनल के लिए थोड़ा सा साइड पे आ जाइए। Okay, दोनों हाथों को सीधा रखिए। Breathe in, breathe out. You are trying to expand your chest. आप बड़ी shallow breathing करते हैं जो even अपर लोब से भी नीचे नहीं आता है। तो ट्राई टू लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, दैट विल रीजनरेट यू एज वेल। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, दिस विल हेल्प इन योर स्कैपुलर मसल्स। तो जिनका पॉस्चर खराब हो जाता है, राउंड शोल्डर होता है, मिड बैक पेन होता है, उनके लिए ये सब एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, एल्बो को साथ में लाइए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, out. Stretch कर लेते हैं, नेक को, हाथों को साइड में रखिए। So left hand goes out and you bend towards your right side. Hold this stretch for 10 to 20 seconds. Again, 2 to 3 repetition. So let's do it on the other side. Your trapezius trying to stretch. Now we will do isometric exercises for neck. Very, very important for people who are working in front of computer or looking at mobile throughout the day. So you will hold your hand here and put an opposite pressure. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the opposite way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Front. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये कितने बार करना है? ये 5 से 10 बार करें और सारी साइड में करें। Now we will do the neck rotation. So breathe in, breathe out. अगर आपको चक्कर आता है, you have dizziness or you are suffering from vertigo or you have cervical spine, then you should be as gentle with these exercises as possible. Okay, so breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Opposite, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Today we're going to learn about Mudra yoga. Yeah, it's a limb of yoga which is slightly less explored because asanas, many people know, Surya Namaskar meditation is very widespread across the world right now. But Mudra yoga is slightly less known. So we're going to talk about that today. So Mudra yoga is where yoga can help you throughout the day. Yeah, understanding our lifestyle, wherein we don't have time for our own work. We can't be doing yoga the entire day. But Mudra yoga is very simple. Yeah, so let's first try to understand what it is. Yeah, Mudra meaning a gesture. Or if you have even watched classical dances, mudras are done even there. Okay, it's a form of expression. Yeah, so in yoga, what Mudra yoga does is that you either have hand gestures, which you can do while you are sitting, while you are
just taking a walk, or while you are even listening to some light music, or even before meditation, before you can fall into the state of meditation, you could be doing Mudra yoga and breathing exercises together. Today, what we're going to understand is a couple of mudras which you can do any time of the day, any time when you don't have to be specifically concentrating. You just have to take out 5 minutes from your day. Most importantly, let's first understand कि ये मुद्रा कैसे काम करती है. कि you are sitting, let's say, in chin mudra. Okay, काफी लोग मेडिटेशन के वक्त चिन मुद्रा में बैठते हैं. ये इसी मुद्रा में you sit down on in either वज्रासन, पद्मासन, and then you do the meditation. लेकिन इससे होता क्या है? Yeah, it's actually very simple logic. Okay, energy in our body is like electric waves, or it's like if you are doing chin mudra, you're creating an electric loop. It's a loop of energy. तो अगर आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, यहाँ पे सारी नर्व एंडिंग्स हैं, समझ रहे आप. उसके बाद अगर आप इस मुद्रा में है, you are creating an energy loop which reuses, or even at times in mudras, it re-energizes the energy within your body. First one, chin mudra, early in the morning. Second one, samana mudra, after you have had 1 meal, 2 meals. Okay. Third one, prithvi mudra, refresh button. Fourth one, prana mudra. अगर आप PCOS में कंसिस्टेंट नहीं है तो मतलब जीतना PCOS के अगेंस्ट, मैं जीतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट अ वॉर. ओके, एंड एनीबडी हु इज सफरिंग फ्रॉम इट विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग. ओके, नाउ व्हाट इज द 5 थिंग्स व्हिच इज डेफिनेटली very important for PCOS? Teenagers are suffering from it, young mothers are suffering from it, people see. I help a lot of people with PCOS, so this is one of my very passionate topic. Okay, so I will be talking every aspect of PCOS. So one very important thing is sleeping on time. If you are not sleeping on time, you cannot win your war against PCOS. So there is 8 hours of undisturbed sleep needed. So you need to sleep by 10, 11. Why? Because your body is like a cycle, and anyways the cycle is disturbed, the hormonal cycle is disturbed. If you want synchrony, you have to first bring your body into balance. Okay, so the first thing is your 8 hours of sleep without disturbance. Okay, the second very important point is how much ever weight you are, you need to hydrate yourself that much. So if you are 1 kg, you need to 20 kg, you need to have 1 liter of water. अगर आप 20 kg के हैं तो आपको 1 लीटर पानी पीना ही पीना है. तो अगर आप 80 kg के हैं तो आपको 4 लीटर पानी पीना है. PCOS आप जीत ही नहीं सकते अगर आप हाइड्रेट नहीं करते. ठीक है. थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टाइम पे खाना खा रहे हैं. आपका टाइम मेंटेन होना चाहिए. अगर आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं तो 9 से 9:30 नहीं करिए. आप 8 से 8:30 के बीच में ब्रेकफास्ट करिए. अगर आप 1 से 1:30 के बीच में करते हैं तो 2:30 मत करिए. ओके, सो कंसिस्टेंसी, द बॉडी शुड गेट यूज्ड टू हैविंग थिंग्स एट सेम टाइम एवरी सिंगल डे. डिनर अर्ली करिए अगर आपको PCOS है. जनरली PCOS एक विशियस साइकिल होता है. सो PCOS होता है, PCOS की वजह से थायराइड होता है, थायराइड की वजह से डायबिटीज होता है, और ये साइकिल चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है. तो अगर आपको इस साइकिल से निकलना है तो रात को डिनर अर्ली करिए. विद इन 7-7:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए. तो खाना ठीक खाना है, पानी अच्छे से पीना है, सोना है. चौथी जो जिस चीज के लिए मैं हाजिर हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सरसाइज करना है. नॉट ओनली योगा. PCOS अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ मिक्स्ड एक्सरसाइज. ओनली योगा won't help, only cardio won't help. Okay, I am just squatting. Okay, for 1 minute I will be squatting. Okay, and then I will take a break of say 30 seconds, and then I will
maybe do a plank hold for 1 minute. Okay, so basically 5-6 exercises आप पकड़ लीजिए, प्रॉपर वार्म अप करिए, प्रॉपर कूल डाउन करिए, और ये 5-6 एक्सरसाइजेस, हर एक एक्सरसाइज 1-1 मिनट 45 सेकेंड, 15 सेकेंड का ग्रेप, फिर से ऐसा आप 30 मिनट्स तक करिए. Welcome back. We now have Health4All, the popular Hindi capsule put together by my co-host Kishore Malviya. This time, the topic is 200 crore plus COVID vaccine. What next? Over to Health4All. नमस्कार। इंडिया ने कोविड वैक्सीनेशन के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ एक विरोधाभास भी है कि देश में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या बूस्टर डोज का भी असर नहीं हो रहा है? बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स अब ये भी कहने लगे हैं कि अंधाधुंध वैक्सीन लगाने के बजाय फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए, यानी ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए। कुछ का तो ये भी कहना है कि साइंस पर कमर्शियल इंटरेस्ट को हावी नहीं होने देना चाहिए। आइए सुनते हैं एक्सपर्ट्स की राय। मेरा सवाल ये है कि क्या इस समय वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ आंकड़ा पार करना, संख्या बढ़ाना है? क्या फोकस्ड वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? एक्चुअली मैं यूजुअली ट्विटर पे अगर देखिए तो मैं सिर्फ शेयर करता रहता हूँ, इसलिए कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है उसको लोगों में प्रोपेगेट किया जाए। हम जिस तरीके से पिछले 2-2.5 साल में हम देख रहे हैं कि कई बार हमें लगता है कि साइंस जो है काफ़ी पीछे छूट रहा है, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उसमें आगे आ गया है, तो इसलिए समय समय पे हम जो है ट्विटर पे करते रहते हैं। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने ये कहा कि जो 30 लोगों को लगाया गया और क्या हमारे वैक्सीन का रोल खत्म हो गया। देखिए, इसमें 2 इशू है। एक तो एडल्ट वैक्सीनेशन का 200 करोड़ का आंकड़ा पाना, अगर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अक्टूबर में हम जो है 100 करोड़ पार कर गए थे, अक्टूबर 2021 में, अभी जो है 200 करोड़ जुलाई में पार कर गए। तो ये दर्शाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सरकार कुछ भी कर सकती है। ये तो हो गया लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बात, और उसमें जो है इस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी। अगर सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति है, उसकी जो है क्वालिटी मेंटेन करना शायद कभी कभी जो है डिफिकल्ट होता है। दूसरा पहलू है उसका साइंटिफिक की, इसकी जरूरत कितनी है। अगर जरूरत की मैं बात करूं तो देखिए वैक्सीन का रोल होता है। वैक्सीन से हमने कई डिजीज इरेडिकेट की, मतलब एटलीस्ट वैक्सीन का सबसे बड़ा रोल था स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन में। लेकिन वैक्सीन का शुरू में रोल था जब एंटायर पॉपुलेशन ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, मतलब उनको इन्फेक्शन भी नहीं हुआ था। वैक्सीन का जो हमारे पास था ये आया कि डेटा जो है धीरे धीरे आता गया कि यह जो है डेफिनेटली सिवियरिटी रिड्यूस करता है, डेथ रिड्यूस करता है, लेकिन ससेप्टेबल पॉपुलेशन में धीरे धीरे ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल कम होता गया। नेचुरल इन्फेक्शन जिस तरीके से हुआ, सारा कुछ करने के बाद भी हम रोक नहीं पाए, लॉकडाउन लगाए, डिफरेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, सबके बावजूद भी जो पूरी दुनिया में कहीं भी जो है इसको नहीं रोक पाए। इवन 100% वैक्सीन देने के बाद भी कुछ कंट्री में जहां पे कोई वेव नहीं आई थी, 3 डोज हमने 70% तक लगा दी, जैसे साउथ कोरिया है, आपका जो है सिंगापुर है, इन सबों में जो है उसके बाद भी बहुत बड़ी वेव आई। तो साइंटिफिक इसमें यह है कि क्या उसकी नीड थी कि नहीं।
नीड है कि नहीं। 200 या 400 करोड़ आंकड़ा पाना आंकड़े के लिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव कर रहे हैं, वो एक अलग इशू हो गया कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि कभी भी फ्यूचर में अगर ऐसी जरूरत पड़ती है और अगर इच्छा शक्ति है हमारे ऊपर के लोगों में, तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इतना इरेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अगर हम 200 करोड़ पा जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं। डेनमार्क ने कहा है, एक्सेप्ट किया है, रादर कन्फेस किया है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना एक गलती थी उनकी। भारत के संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पब्लिक हेल्थ में हम हमेशा देखते हैं कि रिस्क कितना है, बेनिफिट कितना है। अगर बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल पे हम डिसीजन नहीं लेते हैं, ओवरऑल रिस्क किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी इंटरवेंशन का रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस हम करते हैं। जब हम रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस एडल्ट में कर रहे थे, उस समय जब ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, तो बेनिफिट जो है उसके फेवर में था वैक्सीनेशन के, क्योंकि जो भी लिटरेचर अवेलेबल था 80 to 90% रिड्यूस कर रहा था। हम ससेप्टेबल पॉपुलेशन को भूल जाते हैं, हम 80 to 90% करें। ये बिगिनिंग में जब हम क्लिनिकल ट्रायल करते, मैं सारे क्लिनिकल ट्रायल में कर रहा था, एडल्ट में किया, बूस्टर भी मैंने किया है, क्लिनिकल ट्रायल बच्चों में भी मैंने किया है। तो उस समय जो है ससेप्टेबल पॉपुलेशन में था, रिडक्शन हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो रहा था, डेथ भी कम हो रहा था, वह था। तो एडल्ट में अगर 80 to 90% मान लीजिए रिडक्शन हो रहा है, और कुछ वैक्सीन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, सीवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कई होती हैं। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन को देखिए तो कार्डियोमायोपैथी करता है, पेरिकार्डाइटिस करता है, कोई ब्लड क्लॉटिंग कुछ वैक्सीन करते हैं, थर्मोसाइटोपिनिया करता है, जीबी सिंड्रोम करते हैं, तो कई, बट ये सब रेयर होते हैं वैक्सीन से। तो अगर सीरियस एडवर्स इवेंट को हम उसमें काउंट भी करते थे एडल्ट पॉपुलेशन में, तो चूंकि 1.5% के आसपास केस फेटलिटी रेट था, इन्फेक्शन फेटलिटी रेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केस फेटलिटी रेट था उस समय, उसमें अगर रिडक्शन हो रहा था तो काफी ज्यादा बेनिफिट था जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल खत्म हो गया तो वह भी बेनिफिट खत्म हो गया वैक्सीनेशन का। चिल्ड्रन के केस में यह ऐसा नहीं था जो डेनमार्क ने कहा, किसी कंट्री ने। आप देख लीजिए, जिस दिन लॉन्च हुआ था मैंने कहा था कि दिस विल इंक्रीज द डेथ्स अमंग चिल्ड्रन। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1.5% नहीं मर रहे हैं, मतलब हर 10 लाख में करीब 15,000 लोग नहीं मर रहे हैं एडल्ट जैसे। 18 साल से कम में जो है या 2 पर मिलियन है, मतलब हर 10 लाख में 2 बच्चे मर रहे हैं। यहाँ पे अगर रिस्क बेनिफिट आप करते हैं, इवन ससेप्टेबल पॉपुलेशन, वो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे किसी भी बच्चों को इन्फेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, आपने अपने आर्टिकल में ये भी कहा कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसको ग्लैमराइज किया गया है, तो अभी तक किसी ने आपको एंटी वैक्सर कहा कि नहीं? सबने कहा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एंटी वैक्सर नहीं हूँ, बल्कि जो वैक्सर है वो क्या है कि इसका अगर ये वैक्सीन को हम इसको रेपुटेशन खराब, वैक्सीनेशन का रेपुटेशन खराब होगा तो दूसरे वैक्सीन में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जैसे लोगों का एक स्टेज आता है कि भगवान में विश्वास उठ जाता है, तो इतना ज़्यादा भी अंधविश्वास से एक ऐसा ना हो कि सभी भगवानों में विश्वास उठ जाए या सभी वैक्सीन में विश्वास उठ जाए। और अभी ये मूवमेंट जो एंटी वैक्सर मूवमेंट को बहुत स्ट्रांग ये मिल रहा है, यहाँ तक कि वो एंटी वैक्सर मूवमेंट मेरे को बहुत अप्रोच करते हैं, वो सोचते मैं एंटी वैक्सर हूँ। तो अभी मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा ओरिएंटेशन समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे होता ना, अभी इसके पहले सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात हो रही थी, थोड़ा मैं सुना, तो आई एम ऑल्सो कंफ्यूज वेदर आई एम हेटेरोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न। आपने भी वो कंफ्यूजन डाल दिया मेरे को। पर हमारा ये है कि अगर हम वैक्सीन प्रोग्राम का रेपुटेशन खराब होगा तो अच्छे वैक्सीन है, जो रियली इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, वो भी नेग्लेक्ट होंगे, एंटी वैक्सर का ग्रुप बढ़ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहना चाहिए ऐसा, इसीलिए हमको साइंस से बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस को पेश करना चाहिए। और हमारे पास अभी मान लो 200 करोड़ दे दिया, बहुत बड़ा 140 करोड़ का कंट्री है, 10-20 करोड़ ने वैक्सीन नहीं भी लिया है, तो उनको फॉलो अप करना चाहिए, उनको कंपेयर करना चाहिए जिन्होंने वैक्सीन लिया। बहुत अच्छा ग्रुप, 20 करोड़ का लोगों का पॉपुलेशन नहीं होता कंट्रीज का, तो वो उनको नेचुरल इम्यूनिटी आया होगा, उनको फॉलो करें, वैक्सीनेटेड डोज, ट्रिपल डोज, ट्रिपल डोज, उनको सब फॉलो करें, देखें, बहुत अच्छे से रिसर्च हो सकता है। तो अभी हम ब्लाइंडली वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं फॉलो करना चाहिए, हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, वी शुड डू आवर ओन रिसर्च एंड बी थॉट लीडर्स इन दिस वर्ल्ड।
मेरा सवाल ये है कि एक तो है कि वैक्सीनेशन के बाद भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। मेरा सवाल था, जो प्रोफेसर संजय राय ने बताया कि क्या नेचुरल इम्यूनिटी के बाद भी हो रहे हैं? किसी को एक बार इन्फेक्शन हो गया 6 महीने 7 महीने में फिर दोबारा हो रहा है क्या? केसेस जैसे कोविड भी इन्फेक्शन है, जिसको 1 साल पहले भी हुआ या 1.5 साल पहले भी हुआ कोविड, उसको आज भी ऐसा नहीं है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी कोविड हुआ है। और अगर बात करें कि हर्ड इम्यूनिटी की, तो हर्ड इम्यूनिटी की बात से आप जैसे पहले स्वाइन फ्लू फैला था, अब स्वाइन फ्लू ऐसा नहीं है कि जिसको हुआ अब दोबारा नहीं हुआ, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये दोबारा भी हो सकते हैं। तो वो केसेस ऐसे नहीं है कि वो नहीं आ रहे, केसेस अभी भी हैं जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ है, रियकरेंस है। इम्यूनिटी अगर बात करें इस चीज की कि पहले इन्फेक्शन हुआ अब दोबारा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है, अभी भी पेशेंट्स को वो इन्फेक्शन सेम इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। इट डिपेंड्स। अब हम उस सब की बात नहीं कर सकते जो पहले, जैसे जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हो चुका है, या फिर बात करें जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स अगर किसी को हुआ तो पहले बोला जाता दोबारा नहीं होगा। बहुत कम केसेस हैं कि पर हाँ सेकेंड टाइम इस तरह के केसेस कुछ दिखे हैं। बट एट प्रेजेंट अगर कोविड रिलेटेड हम बात करें तो कोविड अगर जिसको एक बार हुआ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 बार 3 बार 4 बार नहीं हो सकता। मेरे खुद एक्सपीरियंस से मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको 3-3 बार सेम हर वेव जब कोविड की आई मैंने उनको ट्रीट किया है, और ऑलमोस्ट थर्ड टाइम भी उनको ये री इन्फेक्शन हुआ है। डॉक्टर इतना तो जरूर मानते हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से डेथ नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि सीवियरिटी से वैक्सीनेशन बचा रहा है, तो इसलिए वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है। नमस्कार। Welcome back. This is just a reminder that this show, Health4All, is live on Facebook and YouTube. From Healthnama, we move on to the current session intro video. Over to session intro video.
Welcome back. The next session is an important session on monkeypox diagnosis, myths, prevention, treatment, and management. And for this, we have with us a senior panel of doctors, leading with Dr. Neha Gupta, senior physician, and with more than 20 years experience. She's from the first batch of FNB qualified ID specialists in India in 2012. She is the founder of NS Swasth Infectious Disease Clinic, Gurgaon, and senior consultant infectious diseases, Fortis, Gurgaon. We have with us also the experienced Dr. Ramanjit Singh, a dermatologist leading the cosmetic and dermatology fraternity of Gurugram with over 20 years experience. He's also amongst the few cosmetologists who brought the concept of laser in India. He's a senior consultant with the dermatology department at Medanta, the Medicity. His clinical focus and expertise are clinical dermatology, acne scars surgeries, laser therapy for acne scars, chemical peels, microaberrations, microsurgical facelifts, threadlifts, etc. Joining him will be Dr. Richa Chowdhury, a dermatologist, venerologist, leprologist, and aesthetic consultant at Dharamveer Solanki Hospital and Skin Castle Clinic in Delhi. She has experience of over 10 years in dermatology. She is a member of the Indian Association of Dermatologists, Venerologists, and Leprologists. Last but not the least, we have Dr. Chavi Gupta, a senior consultant with Fortis Noida, with experience in management of various kinds of infections. She has extensive experience in handling COVID patients working in COVID wards and ICU at various setups like AIIMS Trauma Center, New Delhi, AIIMS Central Hospital, New Delhi. For the first round of questions, I now hand over the platform to my co-host, Kishore Malviya. Thank you, sir. Thank you. डॉक्टर नेहा गुप्ता, मुझे बताया गया कि आपको जल्दी जाना है, तो मैं आपसे ही शुरू करता हूं. डॉक्टर नेहा गुप्ता, आप हैं? ओके. डॉक्टर रमनजीत सिंह, लैंसेट मैगजीन ने कहा है कि वीमेन आर नॉट इम्यून टू मंकी पॉक्स. दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि प्रेग्नेंट औरतें जो है ज्यादा वल्नरेबल है मंकी पॉक्स के. क्या स्थिति है महिलाओं के को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है और थोड़ा सा भ्रम भी, कंफ्यूजन भी है. क्या स्थिति है? देखिए, मंकी पॉक्स का ऐसे कुछ फिक्स डाटा नहीं है कि मेल्स में ज्यादा इन्फेक्ट करता है, फीमेल्स में कम इन्फेक्ट करता है. बट जैसे आपने बोला, प्रेगनेंसी में डेफिनेटली इम्यूनिटी कम हो जाती है, सो एनी वायरल इन्फेक्शंस कैन फ्लेयर अप. सो वो एक मेजर कारण है. प्लस लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग लाइफस्टाइल, बिकॉज काफी हद तक लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है. जैसे ये देखा गया है कि होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा पाया जाता है, जिनको इम्यूनिटी कम होती है, HIV के रोगी हैं उनमें ये ज्यादा पाया जाता है. तो ऐसे लोगों में इसकी मंकी पॉक्स को कैच करने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है. आपने कहा कि होमोसेक्सुअल्स में ये ज्यादा फैलता है. क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? नहीं तो क्या वजह है कि ये होमोसेक्सुअल्स में ज्यादा फैलता है? देखिए, उसमें ऐसा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है ही है, एयरबॉर्न डिजीज भी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड से फैलता है. उसके अलावा अगर इवन सेमेन से भी कुछ हद तक डिटेक्ट किया गया है कि सेमेन के अंदर भी ये वायरस पाया जाता है, जिससे कि इसकी ट्रांसमिशन पॉसिबल हो जाती है. सो बाकी और बहुत से वो हैं जो इसके वेक्टर्स हैं, जैसे स्क्विरल्स है या अपना जंगल में रहने वाले मंकीज हैं, इवन टू सम एक्सटेंट रैट से और डॉग से भी फैलने की संभावना हो जाती है इस वायरस की. तो ड्रॉपलेट्स और स्नीजिंग से भी फैलता है? स्नीजिंग, ड्रॉपलेट्स एयरबॉर्न है ना सर. वायरल इन्फेक्शन तो मोस्टली एयरबॉर्न रहता है. तो इवन क्लोज कांटेक्ट में अगर आते हैं, कहीं पे बिग लार्ज गैदरिंग्स हैं, तो वहां पे अगर कोई इन्फेक्टिव होगा, कैरियर होगा, तो उससे भी ये ट्रांसमिसिबल इजीली हो जाता है. डॉक्टर साहब, देश के कुछ एपिडेमियोलॉजिस्ट का कहना है कि मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक एन ओल्ड डिजीज विथ न्यू कोट, फ्रेश कोट.
हल्ला तभी मचता है जब किसी डेवलप कंट्री के बैकयार्ड में ये पहुंच जाता है और तभी WHO पैनिक बटन दबा देता है। आपको क्या लगता है कि WHO ने जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है वो एक गलत फैसला था, वो जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, या किसी डेवलप्ड कंट्री के दबाव में लिया गया फैसला था? ऐसा नहीं है कि उन्होंने जल्दबाजी में लिया ये फैसला, क्योंकि मंकी पॉक्स तो बहुत सालों से था। अफ्रीका के जंगलों में, कॉन्गो बेसिन में बहुत जगह इसके केसेस पाए जाते थे, बट नॉर्मली ये जो था ये बड़े बड़े शहरों में नहीं आता था। तो ऑफ लेट जैसे अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ही बहुत ज्यादा केसेस हो गए, बड़े बड़े शहरों के अंदर फैलने लगा। तो इन लोगों ने एक लेसन भी लिया पीछे कोविड से, बिकॉज कोविड भी जब आया था हम लोगों को इतना नहीं मालूम था कितना बड़ा एपिडेमिक होने वाला है। तो टू बी ऑन अ सेफर प्रोफाइल एंड सेफ्टी, उसके लिए WHO हैज स्टेप्ड इन और उन्होंने काफी हद तक काफी प्रिकॉशंस भी दिए हैं। लोगों की जागरूकता, आप जैसे इस पे हम बैठे हैं तो लोगों को बताने के लिए बैठे हैं कि इसको लाइटली नहीं लेना, बिकॉज पीछे वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम कोविड एपिडेमिक, सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग सीरियसली। स्पेशली जब इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी इतनी तेज है तो वी हैव टू बी ओवर केयरफुल, ओवर कॉशियस। बहुत बड़ा मैसेज है, मंकी पॉक्स को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ बने रहिए, सेकंड राउंड में फिर लौटेंगे हम आपके पास। डॉक्टर नेहा गुप्ता, कई देशों में ये पाया गया है कि मंकी पॉक्स से जो मौत हुई है वे दरअसल एंसेफ्लाइटिस से जुड़ा मामला है। क्या संबंध है दोनों में? मंकी पॉक्स बेसिकली अगर हम देखें उसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो है कि फीवर। आप अपना ऑडियो बढ़ा लें प्लीज। जी, अभी आपको सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है? ये थोड़ा सा और बढ़ा लें कंप्यूटर से तो। मेरा एक्चुअली ये फुल ऑडियो है फिलहाल, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगी। ठीक है जी। सो फीवर, चिल्स के साथ में बॉडी एक होना, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, रैशेस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बट अगर ये सीवियर हो जाता है, इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन एंड मोस्ट कॉमनली जो अभी डेथ हुई, इनफैक्ट इंडिया में भी जो डेथ हुई है वो एनकेफेलाइटिस की वजह से हुई है। सो दिस इज अ सीवियर एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकी पॉक्स। मोस्ट डिजीजेस आर माइल्ड डिजीजेस और मॉडरेट डिजीजेस। बहुत कम लोगों में ये सीवियर इलनेस हो सकता है, और जिन लोगों में होता है उन लोगों में बेसिकली ये रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स है, बहुत एल्डरली पेशेंट्स है, प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन बहुत जो है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में हमें ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि हमने कोविड-19 में भी देखा कि कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें कि चांसेस इन्फेक्शन के सीवियर होने के ज्यादा होते हैं। तो इसी तरह से मंकी पॉक्स में भी देयर इज अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हु आर एट अ हायर रिस्क फॉर सीवियर डिजीज। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ माइल्ड इलनेस। एंड अगेन थोड़ा सा डिफरेंस है कोविड-19 में, बिकॉज कोविड-19 usually as we know droplet या फिर sometimes there is also airborne transmission, close gathering, जैसे कि डॉक्टर रमनजीत ने बोला। लेकिन मंकी पॉक्स में usually it's by very close contact, sexual transmission is possible, and a lot of cases have happened in men who like in MSM patients. So एयरबोर्न ट्रांसमिशन इतना कॉमन नहीं है, बट अगर मान लीजिए पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है और कोई एयरबोर्न एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर जैसे कि कोई ब्रोंकोस्कोपी या कुछ किया जा रहा है, तो उस समय एरोसॉल ज्यादा जनरेट हो सकते हैं, जिससे कि वो ट्रांसमिशन ज्यादा हो सकता है। अदरवाइज क्लोज कॉन्टैक्ट, यूजुअली अगर आप 6 फीट के डिस्टेंस में है मोर देन 3 hours, देन चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन बिकम्स अ लिटिल हायर। इसके लिए मतलब ये बस ये एंड दूसरा एक और चीज है इसमें कि इन्फेक्शन जो है सिम्टोमेटिक पेशेंट से होता है, अनलाइक कोविड-19 जिसमें कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी ट्रांसमिट कर सकते थे इन्फेक्शन, या फिर इन्फेक्शन बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स ट्रांसमिट होता था। सो मंकी पॉक्स में यूजुअली ट्रांसमिशन को सिम्टम्स के ऑनसेट के बाद स्टार्ट होता है। तो फिर थोड़ा सा सबको, अगर मान लीजिए फीवर आ रहा है, तो अगर एहतियात बरतेंगे, आइसोलेट रहेंगे, तो फिर इसके
ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होंगे जितना कि कोविड-19 में था। डॉक्टर नेहा, ये भी पाया गया है, जैसा कि आपने भी इशारा किया है, कि जब कोई इन्फेक्शन होता है, पहले से कोई इन्फेक्शन हो या इसके साथ कोई इन्फेक्शन हो, तो ये डेडली हो जाता है। किस तरह के और इन्फेक्शन से इसको सबसे ज्यादा खतरा है? क्योंकि कई देशों में पाया गया कि जो HIV इन्फेक्टेड लोग हैं उनके साथ ज्यादा खतरा हुआ। तो भारत के संदर्भ में किस तरह के इन्फेक्शन के साथ इसके कॉम्बिनेशन में ज्यादा खतरा है? देखिए, ऐसा है कि एज सच ये ट्रांसमिशन से रिलेटेड है, तो अगर, और ट्रांसमिशन एंड इम्यून स्टेटस ऑफ द पेशेंट, अगर क्लोज कांटेक्ट है, स्पेशली अगर ब्रीच है कहीं पे भी स्किन में भी या भी म्यूकोसा में, एंड आपका क्लोज कांटेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पेशेंट विल इंक्रीज। सो इसीलिए इस ग्रुप ऑफ पेशेंट में, बिकॉज देयर इज अ सेक्सुअल एलिमेंट there, so that is why transmission is more common in this group of people. If the patient is, suppose people who are living with HIV, they are completely suppressed, they have good CD4 count, so immunity wise they are as like any other individual who do not have HIV infection. तो उसमें अगर एहतियात बरती जाएगी तो ऐसा नहीं है कि उनको हो जाएगा। So mainly it is related to the contact, close contact, and अगर इम्यूनिटी ठीक है तो माइल्ड डिजीज या मॉडरेट डिजीज, जो कि सेल्फ लिमिटिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, एंड रिकवरी यूजुअली विद इन 4 वीक्स हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर नेहा, आप हमारे साथ बने रहिए और सेकंड राउंड में हम जल्दी लौटेंगे आपके साथ। आपने जो समय दिया है कि आपको जल्दी जाना है, उससे पहले हम कोई बात नहीं, वो मैं, हाँ, जैसा भी आपको, तो हम आपके पास सेकंड राउंड में शंकर जी लौटेंगे। डॉक्टर ऋचा चौधरी, दिल्ली NCR में मंकी पॉक्स का पहला केस डायग्नोस करने वाली डॉक्टर आप हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं। अपना अनुभव शेयर करिए। क्या लक्षण देखा, कैसे पता चला, शुरू में आपको क्या लगा, बाद में कैसे पता चला ये मंकी पॉक्स है? थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें। ऑडियो कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल जी, नमस्कार। पेशेंट जब मेरे पास पहले बार आया था तो पेशेंट को पिछले 2 से 3 दिन से फीवर की हिस्ट्री थी, यानी उसे 2 से 3 दिन से बुखार था, और जैसे नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में होता है कि बुखार, सर में दर्द, बॉडी में एक, ये सारी कंप्लेंट्स थी, लेकिन साथ में उसको बॉडी पे कुछ दाने आने शुरू हुए थे। पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उसे चिकन पॉक्स हो गया है, तो पेशेंट को सिर्फ ये कंफर्म करना था कि क्या मुझे चिकन पॉक्स हो गया है, क्योंकि दाने बिल्कुल भी चिकन पॉक्स जैसे मुझे नहीं लगे थे, क्योंकि मोस्टली जो उसको थोड़े बहुत दाने, हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो मैक्यूल्स एंड पेप्यूल्स स्टेज पे ही थे, और वो पाम सोल्स पे थे और जेनिटल्स पे थे। क्योंकि फीवर की हिस्ट्री थी तो मे बी मुझे लगा कि चिकन पॉक्स तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन EM हो सकता है, जो हमें इरिथमा मल्टीफॉर्म में पोस्ट वायरल हो सकता है, क्योंकि अल्सर्स की हिस्ट्री आ रही थी। लेकिन तो पेशेंट को उस टाइम हमने कहा कि नहीं, चिकन पॉक्स तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हाँ, हथेलियों पे लीजन्स थे एंड इची नहीं थे दाने, बिल्कुल भी पेनफुल थे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए EM के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसे ट्रीट किया एंड भेजा। 5 डेज के बाद पेशेंट वापस आया हमारे पास, एंड उस टाइम पे पेशेंट के लीजन्स और ज्यादा पेनफुल हो चुके थे। लीजन्स का साइज इंक्रीज हो चुका था, ना EM में फिट हो रहा था, ना चिकन पॉक्स में फिट हो रहा था। मुझे नहीं, जब मैंने पेशेंट को देखा मुझे लग रहा था मैंने ये डिजीज पहले नहीं देखा है। मतलब आई वांट टू डायग्नोज कि पाम्स एंड सोल्स के लीजन कुछ और डिजीज के हैं, जेनाइटल लीजन किसी और डिजीज के हैं। तो मैं पेशेंट को कहा था कि आप 10 मिनट बैठिए, लेट मी थिंक ओवर इट की व्हाट इट इज। फिर समहाउ आई लुक फॉर इट की मंकी पॉक्स, क्योंकि देखा नहीं होता है तो कभी पढ़ा नहीं तो देखा नहीं, और देखा नहीं तो समझा नहीं वाली बात हो जाती है। सो देन आई लुक फॉर द जर्नल्स कि कैसा है एक्चुअली, इज इट फिटिंग इनटू इट। और एक मेजर बात ये थी कि पेशेंट की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो मंकी पॉक्स फर्स्ट डायग्नोसिस बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया था मेरे। लेकिन क्योंकि पेशेंट जब जिस टाइम सेकेंड टाइम मेरे पास आया था, उस टाइम पे पेन था काफी पेशेंट को, और लीजन्स पाम सोल्स पे इंक्रीज हो चुके थे। अब पेशेंट को मैक्यूल, पैक्यूल, पस्ट्यूल एंड अम्ब्लिकेटेड लीजन्स भी थे, जेनाइटल पे क्लस्टरिंग ऑफ लीजन्स थी।
तो फिर सारा सब मैच हो रहा था कि सब कुछ एक में फिट हो रहा है, अदरवाइज उससे पहले तक ऐसा लग रहा था अलग अलग डिजीजेस में फिट हो रहा है। सो उसके बाद पेशेंट को बोला गया कि देखो, आई डाउटेड दैट इट कैन बी मंकी पॉक्स। पेशेंट पैनिक नहीं किया, पेशेंट को समझाया कि लेट मी लुक फॉर इट, कि कैसे सैम्पलिंग होगी, कहाँ भेजना है। पेशेंट से पूछा तो उसने कहा कि क्योंकि कोविड ने हमें समझा दिया था कि जब भी बुखार हो तो आइसोलेट कर लेना है, तो आई एम ऑलरेडी आइसोलेटेड, मेरे घर में मैं अलग कमरे में रह रहा हूँ। सो दैट वाज अ रिलीफ कि पेशेंट ऑलरेडी आइसोलेटेड था। फिर मैंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि आई एम सस्पेक्टिंग अ केस ऑफ मंकीपॉक्स। उसके बाद अथॉरिटीज टुक एन एक्शन एंड उन्होंने LNJP ट्रांसफर किया पेशेंट को, वहाँ पे उसके सैम्पलिंग हुई और देन इट वाज डायग्नोस्ड। आपने चिकन पॉक्स का जिक्र किया तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये चिकन पॉक्स जैसा ही है या चिकन पॉक्स ही है, शुरू में ऐसा लगता है। क्या सिमिलरिटी है दोनों के सिम्टम्स में, दोनों के तरीके में क्या सिमिलरिटी है, क्या अंतर है? आम आदमी कैसे समझे कि ये चिकन पॉक्स नहीं मंकी पॉक्स है? देखिए, मैं कहूंगी कि आम आदमी के लिए कि चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स सिमिलर भी हैं और डिसिमिलर भी हैं। कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। सिमिलरली जैसे पहले फीवर आता है, किसी भी वायरल डिजीज की आम निशानियां होती हैं कि फीवर आना, बॉडी एक होना, मसल एक होना, गले में खराश होना, ये सारे के बाद 2 से 3 दिन के बाद स्किन पे रैशेज आते हैं, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पानी वाले दाने, पस्ट्यूल्स या मैक्यूल्स, इस तरह से। चिकन पॉक्स में जो दाने होते हैं वो सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, यानी कि पहले ट्रंक पे आते हैं, यानी कि आपका बॉडी का आगे फ्रंट बैक इस पे आते हैं और फिर मुंह की तरफ, बाजों की तरफ फैलते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो मंकी पॉक्स के दाने होते हैं वो पहले फेस पे, पाम सोल्स, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। चिकन पॉक्स ज्यादातर 7 से 10 दिन में ठीक होने तक आ जाता है, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है चिकन पॉक्स का जो। लेकिन मंकी पॉक्स लंबे समय तक रहता है। चिकन पॉक्स में दाने जो होते हैं वो मोस्टली इची होते हैं, यानी कि उसमें खुजली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रादर की मंकी पॉक्स में ये दाने का साइज एक तो बड़ा है और दूसरा ये पेनफुल होते हैं। ठीक होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, 2 से 3 हफ्तों में जाके पूरे दाने ठीक होते हैं। थैंक यू डॉक्टर ऋचा, आप हमारे साथ बने रहिए। सेकंड राउंड में फिर हम आएंगे आपके पास। डॉक्टर छवि गुप्ता, एक बात और कही जा रही है कि जिसे बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ है उसे चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है, ये मिथ है या इसमें सच्चाई है? नहीं, ये बात कही जा रही है कि जिसको बचपन में स्मॉल पॉक्स हुआ है या स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है उसको मॉन्की पॉक्स का खतरा कम है, क्योंकि मॉन्की पॉक्स जो है वो स्मॉल पॉक्स की फैमिली को ही बिलोंग करता है। और ये माना जा रहा है कि जो स्मॉल पॉक्स की वजह से इम्यूनिटी है, चाहे वो नेचुरल इन्फेक्शन से आई हो या इम्यूनाइजेशन से आई हो, उसके बाद थोड़ी सी क्रॉस इम्यूनिटी मॉन्की पॉक्स वायरस के लिए भी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको वैक्सीन लगी है या जिनको नेचुरल इन्फेक्शन स्मॉल पॉक्स का हुआ है उनको मॉन्की पॉक्स होने का खतरा बिल्कुल जीरो है। खतरा तो है, लेकिन उस केस में डिजीज की सिवियरिटी होने के चांसेस बहुत कम है। हमारे देश में इस समय कोविड-19 भी तेजी से फैल रहा है। क्या होगा अगर कोविड-19 और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन साथ साथ हो? कोविड-19 और मंकी पॉक्स इन्फेक्शन का साथ साथ होने की संभावना काफी कम है, क्योंकि ये वायरस के एक नेचुरल कोर्स और रूटीन होता है कि एक समय पर एक ही वायरस रह सकता है, दूसरा वायरस नहीं आ पाता है। और अगर इन केस अगर नेचुरल थ्योरी से हटके ऐसा कोई केस आ भी गया तो उसमें मॉन्की पॉक्स क्योंकि इतना जानलेवा नहीं है, लेकिन कोविड-19 से हो सकता है कि इंसान की, जो व्यक्ति कोविड-19 इन्फेक्टेड हो गया है, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए। जैसा कि देखा गया है कि कोविड-19 के जितने भी स्टडीज और रिसर्च हुए हैं, कोविड-19 से टी सेल्स डिप्रेस हो जाते हैं, इम्यूनिटी काफी डाउन हो जाती है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि मॉन्की पॉक्स की जो रैशेस हैं वो ज्यादा तेजी से फैले या उसमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो। और साथ में क्योंकि कोविड-19 का तो हमारे लंग्स को, जो पेशेंट के लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, उसमें सेकेंडरी मॉन्की पॉक्स अगर साथ में जुड़ जाता है तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि ऐसे में मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएं। बट ये अभी तक ऐसा कोई केस ना पाया गया है और इसके होने की संभावना काफी कम है कि दोनों केसेस एक ही व्यक्ति में पाए जाएं। ये लगभग 3 साल से हम लोग कोविड झेल रहे हैं और सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर्स में लगे हुए हैं
क्या हमारी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में कोई खामी है जो हम जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलता है? क्या दिक्कतें हैं मैनेजमेंट की? क्या कहाँ खड़े हैं हम? क्या सीखा है हमने कोविड से? देखिए, जहां तक कोविड का सवाल है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी देश की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। थोड़ा सा हम पब्लिक को भी अवेयरनेस की जरूरत है। अगर कहा जाता है कि आप मास्क पहन के घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको हम कहते हैं कि वो करने में चूक जाती है, जैसे कि सोशल गैदरिंग्स का होना। तो ऐसे माहौल में अगर हम पॉलिसीज को एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक तरीके से फॉलो करें तो चांसेस हैं कि इस तरीके की बीमारियों के फैलने के और उसके एडवर्स इफेक्ट्स के इवेंट्स कम रहें। तो ऐसे में जनता का जागरूक होना समय के साथ और सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर छवि, आप बने रहिए। सेकंड राउंड में फिर हम आपके पास लौटेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने बताई है। ओवर टू यू मिस्टर शंकर। Thank you, Kishore. I'm a bit confused. Who wants to go early? Is it Dr. Neha or Dr. Chavi? Someone wanted to leave by 10:30. Well, it's okay. Nobody. It's okay. It's okay. Yeah, the session is interesting, and we can go as per your. So I'll start with you, Dr. Neha. Dr. Neha, how different is the pox virus from the coronaviruses? So you're talking about the monkey. We are talking obviously about the monkeypox viruses and COVID-19 difference. So first of all, I think we'll begin with the transmission part of it. Usually, the transmissibility of monkeypox is not as severe as the COVID-19. COVID-19 is highly transmissible. And it would infect, like, depending upon which variant it is, Delta or Omicron, it would infect, the RO factor was very, very high. Whereas for monkeypox is not that high. It is predominantly transmitted by very close contact. So especially if there are any cuts or breaches on the skin, especially maybe on the genitalia, and if there is a close contact with a person who's infected, that's when transmission will occur. The other risk, there are certain high risk, intermediate risk also. So if a person is with a person who's infected in the same room for within 6 feet for more than 3 hours, that also increases the risk of transmission. And otherwise, definitely the risk of transmission is much lower than the COVID-19. COVID-19 would get transmitted from asymptomatic patients. It would get transmitted before the onset of symptoms as well. Whereas in monkeypox, the transmission occurs once there is onset of symptoms. That is, once there is fever or any kind of maybe chills, myalgia, that's when the transmission will occur. So if there is vigilance about the symptoms and the patients isolate themselves with the slightest of this, then the transmission will definitely reduce down. Again, COVID-19 is an illness which is symptom-wise. COVID-19 we don't see rashes as such, whereas in monkeypox, as Dr. Richa mentioned, that the predominant symptom was the rashes. So fever, chills are common in both. COVID-19 will have sore throat, running nose, sometimes cough, whereas in monkeypox, it's going to be a little bit of more of headache. Body ache will be much severe, presence of rashes, especially on the mouth, face, palms, and the soles. The duration of symptoms of COVID-19 is usually what we are seeing right now. It resolves within 5 days or so, but in some patients, the severity of illness is in the second week, which is the inflammatory or the hyperinflammatory phase. So usually it's a 2 week of illness which we can see. Whereas in monkeypox, it's an illness which can go on for 2 to 4 weeks with resolution in majority of the patients within 4 weeks.
COVID-19 treatment-wise, symptomatic treatment, again, with in case of moderate or severe illness, we give remdesivir. We have an effective antiviral therapy available in India and the treatment as well. Whereas for monkeypox, we do not have any particular treatment available as of now in India. There are certain medications which are yet not FDA approved, but they have been used in the past because monkeypox was like we have had cases in the past, and these antiviral agents include we have cidofovir, brimcidofovir, and another antiviral agent, along with certain immunoglobulins, which can also be given for the management of monkeypox. COVID-19 ke liye we can prevent it with effective vaccination. We have, whereas was monkeypox, as of now in India we do not have, but yes, there is a monkeypox vaccination which is available in the Western world, which can be used for prevention as well as if there is a contact with a close contact with somebody who's infected, as a post-exposure prophylaxis as well. Who are the people who are most vulnerable to monkeypox? So, in any illness, it's actually our immunity which plays a very, very important role. So, all of us can have infection, but whether it is getting converted into an active disease or if it is progressing to a severe disease depends upon how our body responds to it. So, patients who have decreased immunity, which includes immunocompromised patients, again, elderly patients, patients with pregnant women, children, and of course, patients who have got, or people who are living with HIV, if they have any other problems associated, they will also be at risk for a more severe illness. Fine, yeah, it is, you're an infectious disease specialist, so there is generally a sort of a theory saying that if there is a predominant infection like the coronavirus, the other infections take a lower role. That is, they don't raise their head up because there is a boss on top of them. Is it correct? Yeah, so this was just mentioned by Dr. Chavi as well. Yes, usually this is there. Like if there is a predominant infection, then the chances of other viral infection, becoming much more prominent becomes less likely. So co-infection, we don't have much of data as of now. We just have to see how this whole illness is evolving. Thank you very much. I'll come back to you, Dr. Ramanjit. You just mentioned that this virus was known in Africa, especially it was quite well known, and it gained prominence only when it came to the Western world. Well, now we have, deforestation taking place. So the bats have started coming home. We have pigsties at home. We have cows staying in the bedroom. Then we have rats all around. We have swine flu. So a lot of these zoonotic diseases are on the rise. So what is your viewpoint on this? Because the contact between humans and animals, the dividing line is becoming thinner and thinner and often quite gray. Definitely, we have rodents, we have other, zoonotic animals coming, but you see, only if it is infected, then we tend to have more of, we have the tendency of catching this sort of a viral infection. But definitely, these days, living in a good society, the people who are not very well socioeconomically well off, there are definitely chances, but unless there's much of infection, because with monkeypox, normally it cannot spread without having a transmissible route. So if there is transmission, certainly we have to take care of that. So the normal thing that people do is when you have some sort of disease like this, you start eliminating animals. For example, you have this ducks being eliminated in certain places where you have flu. Is this? Do you go towards sort of keeping monkeys away? I don't think so. Monkeys certainly, we have to be more careful where they are more there, like in zoos or other places. But otherwise, monkeys, I don't think in normal society they are much around.
So that way we don't have to be we don't have to be very, very careful, because again, it is the prevalence, it is the place where it is originated, where it is concentrated, on those parts of the world. Certainly people have to be more cautious, but here as of now in India, I don't think there should be any matter of panic. I will come to your specialty now. You actually, the monkeypox badly affects the skin. You're a dermatologist, and will monkeypox leave behind permanent scars on the skin, especially the hands, or is it treatable through cosmetic surgery? Certainly, scarring can definitely occur, because the lesions, what monkeypox gives, it manifests, it is like pleomorphic lesions. All type of skin lesions can appear. It can be macules, papules, vesicles, pustules, and if not treated properly, it can lead to definite permanent scarring. Once scarring comes, we have to be very, very careful. And why scarring comes? If it is not treated in the early stages. Once patient comes to you, suppose he has few macules or papules, if you give them good antibiotics, if you give them topical medicines, then we can definitely help in preventing scarring to some extent. Plus, once there is scarring, then certainly role comes of cosmetology, cosmetic procedures. There are various procedures done these days, especially microneedling. We have we are doing PRPs. All these, they definitely help to get rid of the scars. But of course, 100% correction cannot be achieved. Multiple sittings are required. All these are expensive procedures. And, if done properly, we can definitely achieve up to 70 to 75% improvement, which is, I feel, a good improvement. But if we are careful, once we, start getting these lesions, if they are treated well in times, then scarring certainly won't occur, and it can definitely be prevented in 100% of the patients. You're also an expert in laser and dermatology. Does laser also have a role to play in this? Yeah, that's what I said. MNRF, lasers, fractional lasers, they have good roles along with that. But 100% you cannot achieve the target even with the lasers also. And multiple sittings, expensive procedures, plus you have to have good, good knowledge of it. And after lasers also, you have to be very, very careful, like good sun protections, all those things. If done properly, we can definitely achieve good improvement, say out to the tune of about 70% with good scarring. Thank you. I'll get back to you, Dr. Manju. Very informative regarding the rashes. Thank you very much. I'll come back to you. Dr. Richa, you of course narrated how you first found the patient and how you treated him. But let me ask a question. Is there a protocol set in to treat monkeypox patients? Monkeypox as such doesn't require a specific treatment. It needs a symptomatic treatment depending on what symptoms you are getting, right? If you are getting fever, then fever needs to be treated with antipyretics and NSAIDs. If you're getting skin infections, then primary aim is to prevent secondary infection, secondary bacterial infection. So you give antibiotics and keep the skin lesions clean, give topical antibiotics, then so that it doesn't get secondarily infected. The lesions does not penetrate the deeper layers of skin and do not cause scarring. If there is complications, the patient leads to complication, then it is treated accordingly. So there is no set protocol that every patient needs to be treated on this same line. It has to be individualized. I was not actually speaking about treatment protocols. I was speaking about isolation and other things. Like, when you find a patient, how long does the isolation last? What are the protocols to be taken? For example, one of the patients in Kerala, he played football with the other people, and the entire team was actually isolated. So what is the protocol regarding isolation? Presently, the protocol is isolation. If you have symptoms for 21 days, you have to be isolated. Your family members or your primary close contacts have to be isolated and have to be under active surveillance. That you have to be closely monitored for any active symptoms. The good thing about monkeypox is that, unlike as Dr. Neha said, that it is not transmissible unless you have the symptoms. So that is a good thing, that if you have symptoms, you isolate yourself. Symptoms even means you having fever or a sore throat or a myalgia. That also counts in the symptoms, and you have to isolate yourself
inform the authorities so that the sample collection can be done. Presently, home isolation, I don't think in Delhi it's allowed. Home isolation is not allowed for the symptomatic person. He has to be admitted, and presently the centers I know is LNJP and G2P. There the sample collection is done. For the contacts, the home isolation is allowed unless they get the symptoms. Fine. And does monkeypox in any way cause morbidity in patients? Earlier, when it was not that prevalent in the world, it was only confined to the African areas. There, the morbidity was only because I wouldn't say it was only because of the monkeypox. I would say that it was because of the non-availability of the resources, also non-availability of the medical facilities also. So presently, the two strains are there of monkeypox: the Western African strain and the Central African strain. So the Western African strain is not that morbid, and that is presently spreading. The Central African strain is more morbid. The Western African, what we are seeing, the surge we are seeing is basically of the less viral, less virulent strain, and the morbidity is what is expected is less than 1% of. Fine. You are a venerologist and leprologist also. Is there a similarity between symptoms caused by venereal diseases and monkeypox? Because the monkeypox also infects, when it infects the patient, the genitals are also involved. So the genital lesions sometimes mimic other STDs also. So yes, when you are a venerologist, you have to look for other STDs also, sexually transmitted disease. And in a way, yes, the lesions can mimic other STDs also, because the ulcers can be of various morphologies. They can mimic the chancroid, or they can mimic the mixed ulcers. Fine. Thank you. We will come back to you, Dr. Richa. It was wonderful speaking to you. Dr. Chavi, you have in your recently extensively handled COVID patients. If a monkeypox patient comes to a hospital, I have asked this question before to others also, what are the precautions that a doctor and the paramedical staff should take? The monkeypox patient, if comes in the hospital, all patients will be kept in some isolation wards. So that does not require very much air handling changes, because in COVID we used to have we ideally should have a negative pressure isolation rooms, but that was not feasible in such a large outbreak. So in monkeypox, not very special preparations are required for maintaining wards. Yes, isolation with separate washrooms are required, and healthcare staff and all doctors needs to follow all the similar precautions. They should wear gloves, and they should have all coverage around their body, because since it is transmissible through body fluids also. So any sweat in the patient's body, or if the lesions are there, or any pustule boils, if there is any rupture from the lesions. So all these infected material can easily transmit virus to healthcare staff also. So they need to wear mask, and they need to wear all protective gear. And we can say that by this time, as if we see today's scenario, we have lot of PPEs and kits available in our country because of the COVID. So that will not be an issue this time. The kits or the PPE precautions is definitely available at this time in our country. So these are the all basic precautions that healthcare staff has to take it. Basically, hospitals will have to be careful. Yes. What are some of the facts and myths associated with monkeypox? Some of the facts, as we are in this discussion from the last 40 to 45 minutes, we have already discussed so many things that monkeypox virus is not as severe as other virus like Ebola or COVID were there. However, it can still cause some mortality and severe diseases, secondary infections in immunocompromised patients, जिनकी immunity पहले से खराब है, जैसे कि जो हमारे pregnant females हो जाती हैं, या फिर उनकी immunity down होती है pregnancy की वजह से, या जो हमारे cancer patients हैं, या और भी जो थोड़ा extremes of ages पे patients होते हैं, elderly population है, highly diabetics हैं, recent transplant patients हैं, इन सब patients की immunity down होती है, तो इसमें infections के बढ़ने के चांसेस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. जैसा कि डॉक्टर रिचा ने बताया कि देयर इज एन ऑलवेज चांस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस ऑफ इवन स्किन लीजन्स.
So any secondary infection of even skin lesions can, if not treated properly or if neglected, can become a source of sepsis. Sepsis में वो patient जा सकता है. साथ ही साथ एनकेफेलाइटिस, जैसा कि हमने देखा कि केरला में जिस पेशेंट की डेथ हुई थी उसको एनकेफेलाइटिस हुआ, ब्रोंकोनिमोनिया, इस टाइप के इन्फेक्शंस रह सकते हैं. तो ये एक फैक्ट है कि मॉन्कीपॉक्स वायरस इतना सीवियर नहीं है, बट अंडर सम सर्कमस्टेंसेस और सम कंडीशंस इट कैन बिकम अ सीरियस थिंग. सेकेंडली, जो इसके मिथ है कि ये चिकन पॉक्स जैसा है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि चिकन पॉक्स के रैशेस में और मॉन्की पॉक्स के रैशेस में एक फर्क है. दूसरा, जो स्मॉल पॉक्स को अगर हम देखें तो 1980 के दशक के पहले के जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर वैक्सीनेटेड विद स्मॉल पॉक्स. तो ये भी हमने डिस्कस किया कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो एक क्रॉस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकती है मॉन्की पॉक्स के लिए. लेकिन ये अभी तक ऐसा कोई लिटरेचर या डेटा नहीं है कि जो लोग स्मॉल पॉक्स से फुली प्रोटेक्टेड वैक्सीन से हैं या फिर नेचुरल इन्फेक्शन से, कि उनको मॉन्की पॉक्स होगा ही नहीं. ऐसा भी कोई डेटा अवेलेबल नहीं है. तो ये भी एक काइंड ऑफ मिथ हो सकता है कि वो फुली प्रोटेक्टेड है. हाँ, क्रॉस प्रोटेक्शन हो सकती है, बट कितनी प्रोटेक्शन रहती है इसका अभी अंदाजा लगाना इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है. और जहां तक किड्स का सवाल है, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, सोशल गैदरिंग, स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो वो भी एक वनरेबल पॉपुलेशन है इस वायरस को एक्वायर करने के लिए. दूसरा एक ये फैक्ट है कि इसमें पैनिक होने की अभी at this situation there is no need to panic, because already COVID से not even in India, पूरे वर्ल्ड ने एक लेसन लिया है कि we should be always prepared to handle any kind of this epidemic or pandemic. और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो हम एक चल रहा है कि ये sexually transmitted disease है, it is not totally we can say it is a sexually transmitted disease. It is because of the close contact during the sexual exposure the disease transmitted. So ये एक gray statement है कि whether it should be considered as a sexually transmitted disease or it should be considered as a close contact से फैलने वाला disease. Thank you. And I'll now wind up my session at least with a common question to you. And there is a pattern in all these diseases. For example, the first COVID virus was detected in Kerala. The monkeypox was in Kerala. The disease due to bats was in Kerala. Now, what is the commonality? Why is it in Kerala? Is there anything? Is it because the detection is early, or is it because of the thick population? What are people traveling too much? I'll start with you, Dr. Neha. Your take on this? I think it's because of the global travel. We are seeing Kerala has always been noticing people coming from Dubai, Middle East. So it's because of the travel, probably the cases have more. I mean, we are seeing the first cases in India in Kerala. Your take, Dr. Ramanjit? Yeah, traveling is one. Plus, apart from that, I feel literacy is very high. So the people, awareness becomes more. And that's how probably, people, they start to visit your doctors early. And that's how could be a big reason for that. Yeah, in fact, in Kerala, even a common cold can drive you to a doctor. Because awareness, literacy is very, very high. Yeah. What about you, Dr. Richa? What is your take on this? I agree with Dr. Ramanjit that traveling is one and the awareness. These are the two factors we can say. Fine. And Dr. Chavi? I would say apart from the tourism, that is the international tourism, high literacy rate, public health authorities are very strong in the Kerala in always catching such kind of disease. If we say Zika virus was also first detected in the Kerala, then there was a West Nile fever, and there are a lot of infectious disease specialists in the Kerala that is contributing to this outbreak investigations and control. So public health authorities also play a very important role in Kerala, but I feel that there is always a good catch of disease from the Kerala. Yes, I think it's a mix of people traveling, awareness due to literacy, a strong public health infrastructure that is present, and of course all these factors. And last but not the least, most thickly populated state in India. I think it's because of that it transmits very fast. And now, thank you very much. Quite an insight to monkeypox, which is quite nascent. I only hope that it stops with the monkeys and doesn't jump on to others like the donkeys and rhinoceroses. I think we should be very careful regarding all diseases jumping from animals to human beings.
Then I would like to say one thing, that it is not that only it is found in the monkey. It is named as a monkeypox virus because it was first detected in a monkey. So any another animals like rodents, squirrels, these are also reservoir of this virus. So it is a myth that it is found only in monkey. Yeah, fine. In fact, a lot of people even now say that it is monkeypox. They ask a question: are there monkeys around your house? Because it's associated with it is not like it is. It was first found in monkey. That is what is it's called monkeypox virus. Fine. Thank you very much for your answers to all the questions, and it was a wonderful session. Over to you, Kishore, for your round of questions. Thank you, sir. WHO ने जो हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है, उसके बाद तो कई रूरल इंडिया में देखा गया है कि पत्थर और डंडे लेकर लोग मंकी को भगा रहे हैं. लोगों को लग रहा है कि मंकी के आने का मतलब है कि मंकी पॉक्स आना. डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमन जी, जैसा कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर ऋचा ने कहा था कि उन्होंने जो पेशेंट देखा, और भी बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी इन्फेक्शन हुआ है. तो आपका क्या मानना है कि क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत है? सर्टनली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अगर ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं है, वो कहाँ पे गए, किस किस से मिले, कोई पार्टी अटेंड करी, उसमें कौन लोग थे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इसी को बोला जाता है. सो उसका मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ, बिकॉज वो जहाँ इन सज्जन को अगर किसी ने इन्फेक्ट किया तो वो बाकियों को भी इन्फेक्ट करने के लिए सक्षम है. सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें इसको डिजीज को जल्दी रोकना है तो. डॉक्टर ऋचा, आपको पता चल पाया आपके पहले पेशेंट से कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन मिला? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये मैं जानना चाह रहा था, मेरी इच्छा हो रही थी जानने की, जब आपने उनको बताया कि आपको मंकी पॉक्स है और आप पहले केस हैं, तो क्या रिएक्शन था उनका? देखिए, ऐसा तो मैंने पेशेंट को नहीं कहा था कि आप पहले केस हैं. मैंने उससे सिर्फ ये कहा था कि मुझे शक है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है, एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज क्योंकि अभी प्राइवेट लैब्स में अवेलेबल नहीं है, सो हमें अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है. पेशेंट जागरूक था, आई वुड से पेशेंट एजुकेटेड था, बिल्कुल पैनिक नहीं किया था. मुझे पहले ये डर लग रहा था कि मैं किसी को भी ये न्यूज आउटब्रेक करूं कि मैं सस्पेक्ट कर रही हूँ मंकी पॉक्स, तो कहीं पेशेंट ही ऐसे पैनिक कर जाए. तो पेशेंट शांत था, पेशेंट ने सारी बातें सुनी आराम से. उसने पूछा क्या क्या करना है. मैं अभी फर्स्ट थिंग इज आइसोलेशन, लेट मी अरेंज कि कैसे सैंपल कलेक्शन और सब होगा. एंड बिल्कुल उसका नंबर्स और हमने अथॉरिटीज ने भी उसको इन्फॉर्म किया जब, तो वो ही कोऑपरेटेड वेल. दूसरी बात आती है कि उसे इन्फेक्शन कहाँ से मिला. ये एक्चुअली अभी ट्रेस नहीं हुआ है, लेकिन यस, पेशेंट ने एक पार्टी अटेंड की थी हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन पहले, जिसके बाद उसको फीवर हुआ था. सो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं था, पर विद इन इंडिया ट्रैवल की हिस्ट्री थी उसकी. मतलब अभी मंकी पॉक्स के नाम से उतना लोग डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, कोई पैनिक नहीं है, हम ये कह सकते हैं, जैसा कि होना भी नहीं, होना नहीं चाहिए, पैनिक होना नहीं चाहिए. WHO ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी है, वो पैनिक करने के लिए नहीं की है, इसलिए की है ताकि हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ये बातें करें, जागरूकता फैलाएं और पैनिक ना करें. आई थिंक इमरजेंसी डिक्लेयर करने की वजह से ही हम यहाँ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं. डॉक्टर नेहा, डेटा एक्सेस में हम अक्सर पिछड़ जाते हैं, और आपने देखा होगा कोविड में भी ऐसा हुआ. लोगों ने कहा कि ये पहला मामला है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टडी नहीं अवेलेबल है इसके बारे में. मंकी पॉक्स में भी लगभग ऐसा ही है. डॉक्टर ऋचा ने भी अपना अनुभव सुनाया. तो ये जो डॉक्टर महसूस करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर महसूस करते हैं कि हम ज्यादातर मामले में डेटा एक्सेस में पिछड़ जाते हैं, जिसका असर, बुरा असर प्रिवेंशन और कंट्रोल दोनों पर पड़ता है. आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये जब हम पेपर वर्क, कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर वर्क करते हैं और हमारा फोकस वहीं पे हो जाता है, ऐसा होता है डेफिनेटली. बट देयर हैज टू बी अ बैलेंस कि ये डेटा को हमें अच्छे से डॉक्यूमेंट भी करना है, और साथ में हमारा जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है प्रिवेंशन का, वो भी उसको बाकायदा करना है. डॉक्टर छवि, आगे क्या? अभी हम माने कि हम कंट्रोल में, देखिए इंडिया में 5,000 केसेस हैं, कंफर्म केसेस हैं लगभग मंकी पॉक्स के, जो किसी भी एक देश से सबसे ज्यादा है.
5,000 तो नहीं है। नहीं, मैं कल देख रहा 10 केसेस के करीब है। मैं कल देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था कि वो 5,000 उनके मे बी दे आर उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग से जो लोग पाए गए होंगे उनको आइसोलेशन के लिए कहा गया होगा, बट कंफर्म्ड केसेस तो 9 to 10 के बीच में। अब आगे ये फैले नहीं, बहुत ज्यादा स्प्रेड ना हो, इसके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, इसके लिए सिर्फ वही राय है कि जो हमने कोविड के समय किया, हमें इस टाइम पे किसी भी लॉकडाउन की या ऐसे बंद करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इतना डेडली नहीं है। दूसरा, कोविड की वजह से हमारी कंट्री आज की डेट में बहुत ही इक्विप्ड है कि अगर इस तरीके का कुछ आउटब्रेक या कुछ एपिडेमिक हो तो उसको हम कंट्रोल कर सके। दूसरा बात ये है कि हमें प्रॉपरली अपना गार्ड जो है उसको गियर अप करके ही रखना चाहिए, जो कि हम इतने टाइम से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोल रहे हैं, उसको अगर हम फॉलो करें कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो हम एक बहुत बड़े आउटब्रेक से बच सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, रेगुलर पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक हेल्थ टॉक्स और लोगों को जागरूक रखना ही इस वक्त एक आवश्यकता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ वैक्सीन का ट्रायल है जो कि इंटरनेशनली चल रहा है, और रिसेंटली जो सीरम इंस्टीट्यूट ने भी हमने ICMR ने हमारा मॉन्कीपॉक्स का वायरस आइसोलेट कर लिया है, तो उस वायरस आइसोलेशन के बाद एक वैक्सीन की संभावना सोची जा सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन अगर एज अ पोस्ट एक्सपोजर, मतलब अगर किसी का मॉन्कीपॉक्स से एक्सपोज हुआ है उसको अगर हम विद इन 5 days दें तो डिजीज की सिवेरिटी बहुत कम हो जाती है। तो इस विषय में मेरा ये ओपिनियन है कि हमें इस वक्त पैनिक और उसकी जरूरत नहीं है। वी जस्ट नीड टू कीप पब्लिक अवेयर एंड वी नीड टू एजुकेट देम, train them to follow appropriate behavior and do not panic at all. अभी जो मैंने आपको 5,000 कंफर्म केसेस मैंने बताया, कल शाम तक 5,000 सस्पेक्टेड केसेस थे। सस्पेक्ट का मतलब। अच्छा, मैं डॉक्टर रमनजीत आपसे शुरू करके मैं चारों से एक लाइन का जवाब चाहता हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे समय, इस वक्त क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो जितने सरकार ने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले हुए हैं, उनके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो बेसिकली लोगों को बताएं कि किस से क्या क्या मतलब सावधानियां हम बरतें जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। ये प्रमुख वो होना चाहिए। सब जैसे मीडिया पूरा सरकार के साथ है तो उस पे ये जागरूकता फैलाएं, लोगों को अवेयरनेस करें, उनको बताएं कि अभी कुछ पैनिक होने की कोई वो नहीं है, बट अपने आप को क्या क्या चीजें जैसे उसमें बताया, इसमें हमें मालूम है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी होता है। सो इन सब चीजों का एक मिथ बना के लोगों को दें और जिससे कि उनके सामने रखें तो वो अपने आप को बचा सके। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्या क्या चीजें हम सावधानी बरतें। सो दिस शुड बी टॉट। आई फील पब्लिक एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। डॉक्टर ऋचा। As Dr. Ramanjit said, public education and साथ में हमें physicians, dermatologist, ENT इन सबको भी थोड़ा सा वर्कशॉप्स या उनसे बातें करनी चाहिए कि पेशेंट किसी के पास भी आ सकता है monkeypox का। पेशेंट को भी समझाना आपकी जिम्मेदारी है और उसका सैम्पलिंग अरेंज करना और ये सारी चीजें भी आपको अरेंज कैसे करना, किसको इन्फॉर्म करना है, विच अथॉरिटी टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सबको पता होना चाहिए। मेरा नोडल ऑफिसर कौन है, हर डॉक्टर को फिलहाल ये पता होना चाहिए अगर हमें इसका स्प्रेड रोकना है। डॉक्टर नेहा। डॉक्टर रमनजीत और डॉक्टर ऋचा ने जो बोला वो एकदम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस। सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक्स, बिकॉज जब तक हम डायग्नोज भी क्लिनिशियन के पास पेशेंट आया, अगर पता ही नहीं है कि कहाँ पे किस तरह से सैंपल भेजना है, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है, तो फिर वो डायग्नोसिस मिस्ड या फिर डिलेड होगा और इससे स्प्रेड के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ available, reliable, easy diagnostics as well for management. डॉक्टर छवि। जैसा कि सब पैनलिस्ट ने कहा कि वो सब तो एक्यूट रिक्वायरमेंट है ही जो आज की डेट में हमें करनी चाहिए, बट मेरा ये मानना है कि इन फ्यूचर
क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो समय समय पर ऐसी डिजीजेस के आउटब्रेक हो रहे हैं। और जब भी ऐसे आउटब्रेक होते हैं हम उसी सिचुएशन पे वापस वहीं जाके खड़े हो जाते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, और हम पैनिक की सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए साइड बाय साइड हमारी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इन्फेक्शस डिजीज स्पेशलिस्ट के नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। वन हेल्थ एनिमल अप्रोच जो इस वक्त बहुत ही कॉमन है, जिसमें हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स और एलोपैथी डॉक्टर्स और इवन एनवायरमेंटल सर्विलेंस का काम चल रहा है, इन सब चीजों को भी साइड बाय साइड स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है ताकि ऐसे फ्यूचर आउटब्रेक्स को रोका जा सके। और इन केस कोई आउटब्रेक होता है तो उस समय पे क्या प्रिकॉशंस, क्या कंट्रोल करना है, उस तरीके से काम किया जा सके। तो हमारा जो सिस्टम है उसको भी हमें साइड बाय साइड स्ट्रेंथन करना चाहिए, वन हेल्थ अप्रोच पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स या टीम ऑफ पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज शुड बी क्रिएटेड टू मैनेज सच सिचुएशंस इन फ्यूचर। आप सबने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी आउटब्रेक से निपटने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जागरूकता। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है हेल्थ एजुकेशन के प्रति। और यकीन मानिए हमारा भी उद्देश्य यही है, इसलिए हमने आज ये एपिसोड रखा है मंकी पॉक्स पर, ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप लोगों के द्वारा मिल सके। और हमने हिल फाउंडेशन ने इनवाइट किया देश के जाने माने डॉक्टरों को, और आप सबने बहुत अच्छे तरीके से हम सब का, आम लोगों का ज्ञानवर्धन किया। डॉक्टर रमनजीत सिंह, डॉक्टर ऋचा चौधरी, डॉक्टर नेहा गुप्ता और डॉक्टर छवि गुप्ता, आप सब हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। रविवार की सुबह अपना कीमती समय आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए आज का शो खत्म करने का। अगले रविवार को सुबह 8 बजे मिलेंगे 3 घंटे के लिए नए विषय के साथ और नए एक्सपर्ट्स के साथ। नमस्कार।